أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So today's session is a very unique session where we have a couple of students from Germany, from UK, from India, and there are also some from Pakistan who have secured jobs. We have recently started a new program, which is known as basically an international program. And what we have done is that we are providing this service as a free service to all the Fortune 500 companies. We are connected with all the Fortune 500 companies pretty much. And one of the key things that we're doing is we are placing our graduates over there who have completed our tracks. And those who are not our graduates, even if they are not our graduates, is fine. We are presenting them as potential candidates to these Fortune 500 companies. Obviously, the probability of you being selected without any skills is going to be very difficult. It all depends on if that person has the right skills or not. But we are providing that service, and this is something new. This will be announced in the next few days officially on our website. In today's session, we have our graduates who have completed our diploma in cloud cybersecurity. Or they're either studying, or they're either basically have completed it, or they have done or they are studying their DevOps advancement track or SysOps advancement track, so on and so forth. And some of them are going to Amazon for their interviews. Some of them have paid for interviews. Some of them have secured jobs. And one of them is a very unique one. His name is Muhammad. He's in the UK right now, and he just completed his master's, but he couldn't find a job. But after he completed our advancement track, he has now gone through a series of interviews. And one of the interviews was very interesting at TikTok. So TikTok is a global company. So I will talk about those things as well. So Mudassir, I will start with you first. So the session is in English, but if anyone is not able to communicate effectively in English, I can talk in Urdu or some of the other languages, but Urdu is one of the languages, or Hindi, I can talk in those languages as well. But I'm going to stay to the script and communicate in basically in English. So Mudassir, you informed me that you have secured a job, you have secured an interview for so first of all, what did you complete it in Germany right now? What did you complete it? What was your degree name? What is the degree title? My degree title is I'm doing my bachelor's with informatics, and it's about to complete. I'm about to write my thesis. And, so you went to Germany to do your bachelor's? Exactly. There are not too many people going to, like European Union or UK to do their bachelor's. That's a tough one. Yeah, at that time, I really didn't know about that because I wanted to go to Australia or UK or something, but my father didn't have much resources. So the education in Germany is almost free of cost. Yes. So they just sent me here, and it took me a time. I just started here in 2017. I just came here in 2017. I did my language course, German language course. And in 2018, I got an admission in the university. So almost 6 years. Almost 6 years I've been in Germany, yeah. But while I was doing my degree, at some point I realized that it's not worth it to get a job after the degree program. So my sister basically was familiar about the Analyst program. She referred me to join. So all of your classmates, after doing their degree programs, were they able to secure any kind of positions? Because I always tell them, like, this is the job market and these are the universities. The universities will never enable you or empower you to sit there, right? They always leave you here in the hanging, and then you have to crawl in somehow and start, trying to find out avenues of how you can secure the job, because they don't prepare you for the job market, right? Yeah. They prepare you for the academic world. So are any of your students, your classmates, with whom you have completed your bachelor's, are they able to go somewhere, or they're still looking for themselves as well, or working here and there on odd jobs? Well, most of them are doing odd jobs. As far as I know,
some of my friends who were with me in the university got a job on their technical basis. Some have known SAP, if you know about the software. Some Yes. have known the developing side. Yeah. Exactly. All of them are getting jobs on their technical basis. No, I haven't known anyone who got a job on the academic basis or completing after a degree. Recently we started this program because now we are connected to the Fortune 500 companies, and we are sending our resumes, our students' resumes over there who have completed like our internship and whatnot. And I have students from Hertfordshire, from University of Kent, from University of Leicester, from Portsmouth. This is from UK. We are going to start in US soon and Canada as well. Roehampton, South Wales, West of England, West of Scotland, University of Westminster, Birmingham University, City University, BPP University, right? Brunel University, Cardiff, University of London, City University of London is one of the top universities, right? Coventry, Glasgow. There are more than, I would say, 35 universities that we have seen, right? And they come from the top 10 to the middle 10 to the bottom 10, right? And none of them have been able to find a job in UK because they did their masters or they did their bachelors. Predominantly 90% of them are doing their masters, and they have done their degree in different subjects, but they can't find jobs because, as I said, the universities prepare you, but this is the job market. They leave you here. They don't ensure that you are able to sit on the job market. So that's the big difference, right? So when you started learning these tracks, someone told you within your family or friends or whatever, right? They told you about us, and that's how you came to know. But when you started learning it, like what happened then? Were you able to secure some of these interviews, or what happened? Yeah, I started in almost 2000, in the middle of 2021 when the Corona crisis came. Then in the beginning, I followed the videos you just mentioned to follow the tracks. And while I was doing my degree program, I just started to complete. Complete the CAT program. And Yes. meanwhile, I was doing it. I also applied for the. I was also helped by the faculty members in the preparation of my CV and provided me an internship certificate, which in fact helped me a lot in getting my internship at the first place. And now I'm working as an intern in a company, and I just also updated my LinkedIn profile, which I was also helped by the Anafi program. Mr. Hamad Siddiqui also helped me in updating my LinkedIn profile. And then I got approached by a hiring manager. I remember, you came to us when you did your internship. When you did your internship with us, as part of the program, there's also an internship program as well, right? So sometime in September 21st, Exactly. contacted us and said, Faisal Bhai, my Al-Nafi internship letter has been accepted by the professor. Yeah. In order to exempt my courses, I need to write a report of at least 1,500 pages. May I get you any suggestion what I should include? And then I talk to you, write down on specific IEC 62443, because Germany is an industrial country. It's an industrial state, right? It's the industrial European state, right? And all the industrial production is happening in Germany. So you will see the predominant area of Germany is all about IEC 62443, risk assessment, risk analysis, all of these things, right? So this is going to help you. And then you went through some of these interviews as well, as you mentioned here, right? Here and there. But alhamdulillah, now, after doing all of those things, you are able to secure good things. Now, I'm going to tell you something about, risk analyst, this position. So the position it talks about, develop us. I'm going to mention it over here. You sent me this thing. Let me share my screen and tell you some of the things so that you are fully prepared to handle, inshallah. So let me do that. Okay, so this talks about, risk analyst.
develop security policies, baselines in accordance with the global policies and standards, and help IT teams with implementation of these standards, right? One of the key things that they're looking for is ISO 27001 and 2, NIST 853, and NIST Cybersecurity Framework, right? So if you look at the job role, it's all about implementing, like it says, design and run security awareness trainings, campaign, establish backup servers and protocols of the organization, design and train employees on organization security best practices. All of these things we have mentioned, we have covered them in our track of the diploma in cloud cybersecurity, because the diploma in cloud cybersecurity covers some unique things. And, because we keep on adding new courses, and that is up to our discretion, whatever we want to add, right? Because the courses are dynamic, so we keep on adding and subtracting courses on demand. So if you look here, this is what you did, basically. And this is the track that you're studying right now, Diploma in Cloud Cybersecurity, as you call level 3. By the way, this is level 3, which is equivalent to A level. So our A level qualification is what enables you to find a job. So can you imagine what will happen if you study level 5, 6, and 7 diploma? Where will you be, right? So one of the things which is mentioned here is basically, this is the course. This is the course curriculum, the official course, right? It includes almost, I would say, 28 courses. But then we have added some demos in there as well. Those are just demos, because if you need to, so for example, there's an AWS architect, but that's just one class. But the core courses are these courses, which is equivalent to 110 credits, right? If you look at your job as a risk analyst, what you have to do, what courses will help you? This course will help you, CSSP. This course will help you, the Cybersecurity Essentials. When you have to perform an assessment of the infrastructure, SysOps will help you. Because in Germany, everywhere you will see Linux is being used as a predominant system for servers. For infrastructure, it's all Linux. Predominantly. I'm saying predominantly, right? You might find Windows here and there, but the mechanism is the same, right? For the implementation of cybersecurity controls and risk controls, CIS top 20 controls. And in your job description, it mentions here, like research the threat landscape and identify current trends, perform security audits to address potential security weaknesses and vulnerabilities. These security audits needs to be performed in line with ISO 27001. If they have any kind of payment data, what is the name, what is the nature of the company? What does the company do? What does it? What does the company, what is the business nature of the company? I think they provide IT solutions. It's a service company, I guess. It's a service company, right? So you're providing IT solutions. So PCI DSS is not applicable to them. But if they're providing IT solutions to other companies, and if they are providing platform as a service, or data center as a service, or infrastructure as a service, or any of those things, and that's infrastructure is storing cardholder data, then PCI DSS comes in, right? So it all depends. Now, if the company nature, if you can send me the link of the company, I can open it on the side. I won't share it with anyone, right? Okay. Until you have everything done and dusted, and then I will share it, inshallah. But what I'm going to do is, if you can just message me on the side, right? One of the key things you have to understand, one of the key things is that you need to understand the nature of the business of the company, because here it says research, track the remediation status of audit findings. So this is where you will do an audit as per the ISO 27001. And I've covered that in ample interviews prior to this, right? I've covered all the things of how to perform the audit. We have taught you, you have performed these things in the labs, in the internship. There's also an official internship starting from 15th of May. There you'll be able to find me twice a week, thrice a week with the teams, and I will be giving them the work, and you'll be able to observe how the work is done. So that is going to, because you will be able to connect to the cloud systems, look at the cloud systems, how they're building it, how they're building up all the servers, the infrastructure, the network, the devices, the database, everything, right? So this will help you in terms of knowing what needs to be done. It says perform security audits. How do you need to perform the security audits? In line with ISO 27001. And this is the course that you need to understand.
the ISO 27001 that we have already covered, right? That course will cover all the key aspects of the things that you need to do. It's mentioned here. This one. This is the course. So perform the risk assessments, identify the assets, identify the vulnerabilities, identify the threats, right? Identify the application owners, identify the process owners, communicate with the process owners. These are the findings. You need to close up these findings in a month's time, in a 2 months' time, in a 3 months' time, as per the risk appetite of the organization. Write down all of these things. Okay, so when you go there, this is how you have, this is all basically recorded. So you can then go back and then you can revisit. And then once you implement these controls, how do you implement the controls? As per the SOA, service, the service applicability, basically, is the one that you, SOA is determined. Statement of applicability. Sorry? A statement of applicability. Statement of applicability. Okay. The statement of applicability is the one that you use to ensure what controls are applicable, what controls are not applicable, right? Those controls which are applicable, basically, you have to ensure that the organization complies with them. They have some kind of controls. The first control you need to understand and emphasize this is during your interviews, it all comes down to people, processes. In the last, it comes technology. Most of the findings can be closed by creating, meeting with the people, explaining them the control, creating a process. It can be an automated process. It can be an automation script. It can be a bash script, a PowerShell script. It can be a Python automation script, whatever it is. We can do all of those things. It can be as simple as recording the assets or whatever things we have, applications or assets or servers or whatever data, wherever we have in an asset register, whatever the controls are, it needs to be identified and documented. Policies and procedures, right? After people comes policies and procedures. In the end, to ensure how this policy is implemented, you go for the technology part. This is how you have to explain it to them. Okay. So that will give you the confidence and that will give them the confidence. Yes, this is the right guy to perform the risk. Because part of the risk analyst, risk analyst, a person who has done business studies can become a risk analyst. A person who has done marketing studies can become a risk analyst. A person who has done basically any subject, he can become a risk analyst. What essentially is a risk analyst job? It is to identify the risks, identify the threats, identify the vulnerabilities, and how we can mitigate those findings. You don't have to be an expert in terms of designing controls. No, you have to be an expert in terms of communicating effectively the risk. That is the key thing. Now, one of the things I said to you is like, as soon as you are able to secure the job, study DevOps and SysOps. Why didn't I say that to you? Because wherever you go, all the infrastructure, where do they reside? They reside in the cloud. All the applications are managed in the cloud. All the infrastructure is managed in the cloud. So how do you perform the assessments of those applications? That's DevOps. How do you perform the assessments of that infrastructure? That is SysOps. So you need to understand both these two key elements, the DevOps and SysOps. So you need to learn the DevOps and SysOps advancement diploma, because this is very, very important for you, because that will give you the confidence you need to ensure that if you find a risk, then how do you mitigate that risk? So if I go here and if I open, the track section, and if I open here and I show it to you, this is the diploma, right? Go to the track section. You don't have to go for the exam because you have already secured the job, right? These are the new tracks that we just launched, AR, VR, and Offensive Security Advancement track. That's the new one that we just launched. So go to the track section and then slowly scroll down. DevOps and SysOps advancement track, right? So open this one. You need to learn these courses because this is going to enable you to effectively manage all the key things, because in the cloud, everything needs to be managed within the cloud. So one of the key courses that you need to understand is basically,
you already learned through LinkedIn and all of those courses, because it already has the diploma in cloud cybersecurity courses. You have already completed all of those, right? Your goal is going to become like covering the Dockers, the deep dive Python automation, Jira with Python, Vagrant, Elasticsearch Bash script, Python Selenium, Python Flask, Ansible, Kubernetes. Each and every application nowadays is running on a serverless architecture. There are no servers. They're running without servers on a pool of resources. How do you perform risk assessment of that? So if you don't know Kubernetes, you won't be able to apply the cloud, the diploma in cloud cybersecurity knowledge, the CCST knowledge that you have learned over there. This is what enables you to ensure that you apply that knowledge, right? And then the list goes on. So for you, it is important that you go through all of these things, because that will enable you to be able to manage this job properly. Because you'll be reporting to senior delivery manager, leads risk analyst, both of them. The delivery manager is responsible for delivering the services to the customers. Have you sent me the company name? I'm about to send you right now. Please, if you can, because so that I can look at the company service and I can tell you what needs to be done. And then it says monitor user access to track anything that indicates a breach. How would you do that? How would you monitor that? Either they are having some kind of solution, right, which is monitoring user access, an identity access management server or anything like that, right? So you need to understand the key things. Otherwise, you won't be able to perform well. So I'm looking at your company right now. What do they do? Oh, they're working in industrial education. What is this? What does this mean? I think he said teleservices. So they are providing what kind of services? So they are providing professional services. I'm just trying to. They are, I think, recruitment consultants or. So this is a staff augmentation company. Yeah, maybe, yeah. This is what they're doing. So what they're doing is they are a staff augmentation company. They work with the Fortune 90 or Fortune 100 companies in Germany. And all they're doing is basically they're providing them services to augment the gap, right? So it's a staffing company. So most probably they will place you on a client where you have to perform all of these services. That's what you have to do. The company has received some of these awards. And I'm looking at what kind of jobs do they have. Yeah, so this is a staffing agency where they're placing different, people on different roles, right? So you'll be working as basically an employee of this company and on most probably a client, where you have to work with these guys to perform all the things that they are asking you to do. So your role is basically design and run security awareness campaigns, right? Now, what does this mean? How do you design and run security awareness campaigns? Security awareness campaign always stems from where? Policies and procedures, right? If they ask you, how would you design the security awareness campaign? So you will tell them, well, the first thing I need to do is I need to understand the people, the processes, and then the technology part. Once I know the people who are the main players in the organization, what are the processes, the policies and procedures and the documentation and everything, then I jump into the technology part. What technology parts enable us to implement these policies and procedures to all the people? And then my job would be to go in and inform them, the policy states you have to comply with the change management controls. What are the change management controls? I will explain to them. The policy states, if you see any link, a phishing attempt, how do you determine if this is a phishing attempt or a scam attempt? Do not share any passwords on any bulletin boards or any messenger or anywhere within the organization. It's not safe, right? So these are the kind of basic security hygiene to how people should work. The security awareness campaigns needs to be designed as per the role and responsibilities of various people. Because if you apply a blanket approach, that may not fit well, right?
So we need to ensure that we design these security awareness campaigns as per the departments, as per different roles. They can be a generic one, and then they can have to be a specific one as well, right? That's what you have to explain it to them. Don't worry, it is all recorded. You can write it down, and this will help you, inshallah. Next thing is establish backup servers and protocols with you. How would you establish backup servers and protocols with the organization? CIS, top 20 controls, which is known as now the top 18 controls. There's a whole section of backup controls. Is it incremental backup, full backup, daily backup? What kind of things are those? So you need to establish all of those things. Design and train employees on organization security best practices. As I was mentioning, you have to enable them. So you have to design and train employees to ensure that everyone is following the security protocols. So this role is mostly for communicator. You have to be an effective communicator because you have to meet different people and you have to understand your universe. What is your audit universe? What is the risk universe? And communicate with them. That's what you have to do. And that's exactly the role that this thing defines, basically. Okay. Now, one of the things that it does is basically, I'm trying to see. A degree in computer science, I mean, C-Risk, you can tell them CSSP certification is already in the pathway. I'm already working on it. Familiarity, they're asking for familiarity. Tell them you're not only familiar, you know how to design the policies, you know how to perform the ISMS, you know how to design the ISMS, the Information Security Management System. You not only know how to write down the statement of applicability, the SOA, what kind of controls are applicable, what are not applicable. If they ask you, give me an example, what controls are not applicable? Well, tell them, physical security controls for a warehouse or something like that. There are different controls. Tell them, I haven't seen a customer on which all the controls are applicable, except a data center, where you need to have a safe spot where you can receive shipments of servers or whatever the case is, right? So that's where we have to have more strict security controls in place, like biometric controls and all these kind of controls. So it is not necessary that all the controls are applicable. It all comes down to what are the key controls that we have to implement, so on and so forth. So strong written and verbal communication skills, strong analytical problems solving, experience and confidence with communicating with and presenting to senior leadership. This is very important. So build up your, I'm going to assist you in the first 30, 60, 90 days in your work. So go with full confidence. What do you have to do in the first 30 days, in the 60 days, and the 90 days? I'm going to assist you with that. After that, you will be self-sufficient. You don't need me anymore, right? You will be able to understand, because what I'm going to do is, I'm going to give you a questionnaire. You have to go back and ask them, what is my scope? What do I have to do, etc., etc. Once you know the scope, I'm going to design a blueprint for you that you need to follow. You need to present it to the senior management. This is my blueprint. This is how I'm going to do it. To the delivery manager and the lead risk analyst. They will say, okay, this makes sense, right? Because apparently it looks like, from the reading of it, they're looking for a person who is familiar with the 27001 and 27002 controls, and who can assist them in implementing these controls. So this role is going to come with a lot of learning for you, but at the same time, it is asking for different things, like interested in defining and analyzing security-related matrices and KPIs, key performance indicators. So if they ask you something like that, how would you define key performance indicators? How would you do that? So tell them, there's a policy for access control. As per the 27001, we need an access control policy, a firewall policy, a network management policy, operational policy, HR policy. All of these policies, at the end of these policies, there should be some kind of cybersecurity related matrices and KPIs. For example, in the HR, how many people came on board? How many people left the organization? What was the lead time that when a person comes on board on the organization, he is given appropriate access to the appropriate systems, right? And what is the lead time when the person leaves the organization? What is the lead time to disable his access? That's a very important KPI, key performance indicator, right? And that is something that I have to do to minimize the risk, because my role as a risk analyst is to ensure
that the risk footprint of the organization is minimized. It has to shrink. If they do not disable the person who left the organization and he still have access, he can do all kinds of things. He can harm the organization, right? When the person leaves the organization, he either happens to leave the organization on a bad term or on a good term, right? It all depends. So if it's a disgruntled employee, we need to minimize that risk immediately. That's an example of KPI. Second example, access control. Who has access to what? If there is a person in HR, he should not have access to, he should only have access to HR systems. He should not have access to security operations center systems or ITIL systems or infrastructure systems. No. His access should be only governed as per the domain in which his roles and responsibilities are defined. And the same thing goes with everyone else. That is a security-related KPI. That's how we define KPI. So each and every policies and procedures will have loads and loads of KPIs. And any violation needs to be detected through a change management system or ITIL system, whatever you have in Europe, in Germany, every organization follows ITIL, ISO 20000. So ask them, I'm sure that you have a change management system, issue management system, problem management system, incident management system. I need to dig in deeper over there and correlate everything. That is my job. So this job requires a lot of attention to detail because you have to look everywhere. Yeah. And especially if you have to look into the cloud, you'll be lost. And that is where your skills for DevOps and SysOps will come in handy. Because you can automate, you can run a script, it will tell you like whatever systems are compliant or not. So if they ask you, assess this infrastructure, if this infrastructure is compliant with all the ISO 27001 controls. So you can't just go into the cloud and check system configuration one by one. You can just run a bash script or a Python script. It will check all the controls if they are meeting the controls or not. And that's what we are teaching you with it. You see, so this is how, and any anomaly detected is how you say, okay, this risk is unmitigated. It can be a port which is enabled, which should have been disabled, right? Like if there is a web server, and if the web server is open to the world, that's a problem. It should only be open to port 80 and 443. All the other ports should be disabled. And if there is any other port which is enabled, we need to have a proper business justification for that. So this role is going to be an easier role for you, inshallah. Whatever salary, they should give you at least 65, 70,000 euro per annum. That's the minimum that you should ask for, right? But I'm going to ask you that this is easier role. This is not going to be, so don't be overwhelmed. But good understanding of arising challenges within the cybersecurity field. No one likes cybersecurity. No one likes it. You know why? Because we have to tell people what needs to be done. No one likes us. No one likes, cybersecurity guys or especially the risk analyst guys, because the risk analysts always try to find the risk because they have to minimize the risk. And the best answer to give to them is like, we have to minimize the risk as per the risk appetite of the organization. That is the most important answer you have to tell them. I mean, what is your risk appetite of the organization? Is it like, risk can only be accepted or mitigated or transferred. It cannot be eliminated. You can never eliminate the risk. As Muslims, you always, we believe in Quran and Sunnah. So we say, we are all susceptible to shaitan, right? So in order for us, that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, always stick with the jama'ah. Because if you're not with the jama'ah, if you're not with the group, the wolf always attacks the person who is alone. He always attacks the sheep which is away from the flock. So you have to be part of the flock, right? So the organization systems needs to be part of the organization systems as per the policies and procedures. If they're going away, deviating, it's a risk and they will be, exploited. And they are vulnerable to risk. Because threat into vulnerability equals risk. Right? That's one of the key things that you learn. So this is going to be very easy for you, inshallah.
willingness to work in an international environment, trustworthy, honest, and reliable. I mean, the job responsibility is not that much, right? It doesn't tell a lot, but what it tells is just like, as a risk analyst, your job would be to go in performing risk exercises. And if they ask you, how would you perform these risk exercises? How would you perform these risk analysis? These risk assessments. Tell them 27,005 standard. I'm going to send you the copy. After this, I'm going to send you the copy, right? So use that copy. Explain to them, how when I design my controls, and tell them like, you may have some of these Excel sheets, or if you're not using any Excel sheets, you may have Archer or Security Matrix or any of these other solutions through which we can perform these risk assessments. If you don't, that's fine. Then we can play with Excel sheets all day long. But if you have a control, a cloud tool, that's better. But if you don't, that's okay, right? So it all depends on client to client. So this is a staffing agency, as you sent me the link, like the Kelly, right? Yeah. So it seems like it's a staffing agency. They will send you as a risk analyst to this organization, and then they will build this organization, and then you will be paid through this organization. This is how it's going to work out. The same thing we have already started doing for our students and for the people from around the world. We have already started doing that thing. So we are already connected with these Fortune 500 because our students are all over the world, right? And Fortune 500. And what sets us apart from other organizations, from other institutes and universities is basically it's a completely hands-on university because we're teaching you the job description. We're not teaching you academic courses because academia courses doesn't help you. It only helps you to leave your country and go to the other country or European country or North America, whatever, right? But once you're there, you need to go into the job market. So how do you make the transition from this is the job market and this is the university? How do you make the transition from here to here? How do you do that? That's what we do. We already bring you over here because, this is a normal university. This is the job market. And this is where Anafi comes in and say, we are already there because we already train you. So you have already been trained with respect to all of these things. So go with complete confidence, okay? And try to write down all these questions that you can understand or you can come up with, right? What does the client do? What will be my role and responsibilities, this and that and whatnot. It says in accordance with global policies and standards. That means like either this role is within the organization or this role is at a customer clients, right? So tell them if it's an internal role or an external role. My role would be to implement ISO 27001, ISMS, all of these things. I can absolutely do that. And it always starts with the context and define the context. So I need to understand the context. Is the context is like this, or is it like this, or is it like this? Because if it becomes like this, we can't address the risk. So we have to surround the circle. What is my scope? What is my context? Am I working here? Am I working here? And what systems are critical? Because that's where 27,001 controls needs to be implemented. And that's how you do it. Okay. Any questions? So far, it's all clear. But the only thing was, as you said, you're going to be assisting me in the initial. I will provide you full assistance for 3 months. Because I was worried about what I was if I got selected, what would I do in the first month, on the second month, and the third month? What would be my strategy to so in the first month, if they give you in the first month, that's a good question. The first month, your role would be to meet all the people, understand the people, meet all the people, know who's who within the organization, who's the asset manager, who's the cloud administrator, who's the applications manager, who's the business process, who's the legal officer, meet all of those guys, right? In the first 2 weeks. In the second 2 weeks, right? This is your first month. This is still your first month. So there, like, imagine like it has four weeks, right? Yeah. So 4 weeks. In the first 2 weeks, meet all the people, build up alliances, build up bridges. Sabah al khair. What do you say in German? Like, hi. Hello. Hello. So say hello. Yeah. My name is Mudassir or whatever, right?
And I think it's an American company, so they're going to be using English because they asked me. You can say, hi, my name is Mudassir. I'm the new risk analyst guy, and I just wanted to meet and greet and understand your roles and responsibilities, because my role is to ensure that I identify all the risks and vulnerabilities within the organization, critical applications and infrastructure and whatnot. So I just wanted to hear, meet and greet, understand, take some notes, say hi, hello, let's do a lunch or something like that. Let's have a coffee and, let's understand each other, right? So in the first 2 weeks, you have to meet people, fill up your diary, meet people. And then ask your senior delivery manager, what's my scope? If he says, this is your scope, the whole data center, the customer support systems, everywhere, wherever we are, storing critical data is under the scope. Then you need to meet all the people who are managing these systems, right? All the managers, right? Who are managing these, because your role is only up to the manager, right? So that's what you have to do. So you have to meet with them, understand them, and understand all the key things. That's the first 2 weeks. In the second 2 weeks, when the first 2 weeks, when you meet them, ask them, do you have any documentation that I can read? So in the next 2 weeks, you will read all the documentation. That makes up 4 weeks, like 1, 2, 3, 4. That's 1 month is gone. So you met the people, and then you have to understand the policies. So whatever policies they have, you try to map it with respect to what you went through in terms of the implementation of the ISO. And I'm going to help you with that. Okay. Right? Perfect. Then this is 1 month is gone. 1 month is gone. Then the next 4 weeks, right? In the next 4 weeks. In the next 4 weeks, you will present a plan and tell and you have to tell at the end of the day, your senior delivery manager, this is my day progress, this is what I've done. And, my role is in the first 30 days, understand the organization, absorb everything, build up, read all the previous reports. If there was any previous person who was a risk analyst, what he did, what he didn't, or she, whatever the case is, right? Understand everything, absorb everything, and build up a picture of what I need to do, right? And then in the next so the 4 weeks are gone. In the next 4 weeks, you develop a plan. What you will do to ensure that, you will start performing your own risk assessment. So whatever people you met, whatever policies they provided to you, then you go in and say, okay, so in the next 4 weeks, you, like the following weeks, the 1 month is gone. In the second month, you will get the buy-in from your manager and say, okay, this is my program. Please allow me to go in and perform these, this assessment of mine, right? So you will take 4 weeks. So that second month, all 4 weeks will be gone in terms of meeting the people again and say, okay, how do you do this? As per the 27001, this is the control. And the control that you're following, it meets the requirement, but there might be some deficiencies, or you might be meeting the requirements. I don't know. Can you please explain it to me? And he might say, the policy states this, but are you doing this? He will say, well, sometimes we do, sometimes we don't. Okay, can you provide me some change management tickets and something like that? So you have to go in and dig in deeper, ask questions. This role is all about asking questions. Like as I said, a person who has done his degree in business, management, arts, whatever subject he has studied, he can easily do these things. He can easily do these things because it becomes easier for them, because at the end of the day, what you're doing is you're just asking, questions. But you need to ask the right question. So have the SOA in front of you. Don't go outside your SOA, right? If the SOA talks about access control, go and meet the access control guy. If the SOA talks about HR, go and meet the HR guy. If the SOA talks about, networking controls, go and meet the networking guy. If the SOA talks about infrastructure, go and meet the infrastructure guy. If the SOA talks about senior management, leadership, risk appetite, go and meet the risk officer, right? That's what you have to do. So the 2 months are gone, and the third month, you will draft a report. So as per what you did, what you reviewed, and what are your observations. That is your first 90 days. After that, you will know everyone in the organization, and they will say, okay, yes, you reviewed all the controls. Yes, we have these
problems, we will address these problems. So give us some time. And this is where you have to go in, and as the role says, and I will show it to you, track the remediation status of audit findings. So whatever audit findings you noted out in the first 2 months, then you have to track them. Hi, John, is this item closed? I just wanted to ask you, Dave is breathing on my neck. He's asking me, what's happening? What are you, Mudassir, where are you? We need to close this item so that we can inform the senior management. Because normally risk analysts, they always report to the risk officers, chief risk officer. So, I need to inform the senior delivery manager, the lead risk analyst about this thing. And he needs to report it to the senior management. Can you please let me know the timing, because the timing is 1st of May. 1st of May is coming. Today is 26th. Yeah. We have a few days left, right? That's what you have to do. But you have to be, very calm. As Musa alayhi salam, Allah says in the Quran, go to Pharaoh and give him dawah softly. That's the number one, method of giving dawah, because risk analyst is just a messenger. Just tell them I'm just a messenger. Don't shoot the messenger. Don't shoot the messenger. Tell them I'm just a messenger. I'm just here to give you glad tidings, right? But also warnings as well, right? Wa bashira wa nazira. Allah says wa bashira wa nazira. Bashir, glad tidings, wa nazira, warnings. Don't tell them bashira wa nazira, right? Just tell them like, one of the key things is basically that I'm here to ask you about this, and we need, the dates are coming close, because then I have to report it to the senior management. If there's a delay and if you're stuck, please give me a good excuse or whatever the thing is, so that I can document it. I'm not going to push you, but if I document it right now, I need some kind of documented answer from you so that I can report it back. I'm here. Tell them I'm here to assist you. If you're stuck, if you don't have the resources, just tell me. I will write it down. They don't have the resources to close this item, so that it can be escalated to the senior management and they can give you the resources. I'm not saying do or die situation. No, that's not the case. I'm just saying follow the protocol, right? That's just a protocol I have to follow. You have to follow. You have to comply, right? And if you have any problems, just tell me. I will escalate to the senior management. I will try to get the resources for you. So that's what you have to do. And you have to keep on doing these things. But along the way, perform security audits to potential weaknesses and vulnerabilities. These security audits will be vulnerability scanning, penetration testing, because you won't be doing these risk assessments all the time. Risk assessment is done only once a year, or after every major change within the network, right? But other things will be done continuously. So if they are at 12 months, in 3 months' time, we will do risk assessments. In 3 months' time, we will do every 3 months, you have to do vulnerability testing anyway, security testing, depending on like what is your role and stuff like that. Research the threat landscape and identify current trends. You have to identify them. This is the practice of DevOps. If we are going towards DevOps, we need to implement Devs and SecOps together, so that the security is embedded within the fabric of the organization, rather than these are the application, this is the security, we're trying to merge them. No, the security needs to be embedded within the organization like this, right? And how can we do that? DevSecOps. So there are many things, and this is what you will learn in DevSecOps and DevOps and SysOps together, right? And that's why I'm telling you to go there and learn these things, because then you will be elevated from, because if you learn these things, you can become the senior delivery manager in the next 1 year time. A delivery manager and a senior delivery manager, like in 2 years, 3 years, you will be climbing up the ladder very, very fast, right? Inshallah, I'm planning to start DevOps in the coming time. Yes. Just I'm about to finish my thesis, and I'll be focusing totally on the emerging technologies, because so far what I've experienced is like after completing my CAT program, I just applied 3 to 4 companies, out of which I got selected, and my friends were like amazed, and they were like, throwing away hundreds of CVs in a week, and they are not getting even a job. And when I completed a CAT program, I just applied for 4 to 5 times just to see what's the response of it, and I immediately got an internship. Alhamdulillah.
Yeah, Alhamdulillah, this is all, Alhamdulillah, allazi bi ni'mati tutimmu salihat, all praises belongs to Allah, from whom good things are accomplished. This is not, my miracle or anyone's miracle. This is all the qadr of Allah, that Allah has blessed you. But the most important thing is, if you follow the protocol, you will be able to go in much deeper. If you do DevOps, you will forget the risk analyst and you will jump in at a much higher position very, very fast, as I was going to tell Shazib Bakar, right? So go with complete confidence. If you have any questions, come to me. I will absolutely help you out. Okay. Inshallah. We have Ranjit. Ranjit, are you here? Ranjit, are you here? Can someone please allow Ranjit to speak so that I. Yes, sir. Yes. So Ranjit, you're coming from India, right? So you started a DevOps track basically sometime when? Like 6 months ago? Yeah, 6 or 5 months ago. 6 or 5 months ago, right? As I told you, you need to complete those courses. You were able to secure the job in a good company. That company that you sent me, they are doing multiple things. They're doing cybersecurity, they're doing data science, they're doing DevOps, they're doing SysOps, they're doing many, many things. And the DevOps track that you have, it covers data science, it covers basically the core DevOps, the Kubernetes and all of those things, right? And it also covers the cloud as well, right? Yeah. So if you study, and the level 3 diploma is already there, that Mudassir also went through. If you go through all of those things, they also have a SOC as well, right? Security Operations Center is also there as well. Yes. So in the Security Operations Center, I'm almost 90% sure that it's an Israeli company, and Elasticsearch is owned by Israeli. And most of the time, Israelis, they consume other Israeli services, right? Because of patriotism, whatever the case is. But in my view, the reason that they select is because it's the best product out there right now. They may be using Elasticsearch, right? And if that's the case, are they using Elasticsearch? You have to find out. If they are using Elasticsearch course is already there in the DevOps advancement track. It is also part of the cloud cybersecurity track as well, diploma in cloud cybersecurity. So there are 3 key tracks of courses of Elasticsearch. Elasticsearch for SOC engineers, and you have a SOC in that company. Elasticsearch for threat hunters, that is part of the threat hunting, and Elasticsearch data visualization. So if you learn the DevOps, and if you learn the cloud cybersecurity track, I've given you, you have the access until May 10th or something like that. Try to complete those things, Ranjit. Yes, sir. You will be able to secure a better job in with a bigger thing, in my view. Yeah. Mohammed Usman, you're coming next, right? So my recommendation to you is, please follow the pathway, because you will be settled much faster. I don't want you to be here because you were working in a call center, right, prior to joining us. Yeah. Even though you had the BS in computer science. No, I'm not. I'm from non-IT background. Non-IT background. You're not. Oh, wow, subhanallah. You're from non-IT background, right? So non-IT background. You were in IT. You had no clue of DevOps. This is another guy, who in Pakistan, who used to say, who's a son of a milkman. His father, he's still selling milk, milking the cows and selling that milk in a village. Yeah. And that person, he studied our DevOps advancement track. He secured a job and now he's in UAE, United Arab Emirates, earning a very good salary, a very, very good salary. Don't you want to go to UAE or Middle East and then from there to Europe? Absolutely, yes. Yes, sir. Why not, right? So for you to follow, my recommendation, brother, is that please complete that track, complete those courses. Your teacher, Ali, who recommended you to join, he is the teacher of DevOps over there. Yeah. Right? Yeah. He's also from Gujarat, teaching phenomenal. He's a very phenomenal teacher. He is teaching all of those courses. So if you learn Bash, automation, Dockers, Kubernetes, all of those things, and all the AWS critical services, and all the open source tools and everything,
Brother, you'll be sitting on 150 to 200,000 Indian rupees salary per month. Yes, sir. I'm telling you right now. Yeah. So my recommendation is please try to invest time, because you from call center, you have been to a DevOps engineer now, right? Yeah. But for DevOps to go upward, you can cover that direction in 3 to 6 months time if you follow that pathway. So please complete those courses, because that will change your life. Okay. Otherwise, you'll be just stuck here and you'll say, oh yeah, I was here in a call center, now I'm working in a DevOps. But I always wanted to go up there and sit up there. But how will I do that? I'm telling you the pathway. You studied enough that you secured this. But now, if you study the remaining ones, you will be able to secure the job. Yes. That's what you have to do. Okay. So Yes, Ranjit, sir. please, that's why I invited you here. These are the brothers who are, we have lots of students from India and Pakistan and Bangladesh and, from around the world, 150 countries. These people are coming in, they're studying, etc., and they're securing jobs. I'm telling you, please go and study that. Follow it through. Okay. Okay, sir. Because Okay. there's a new service that we have started. We are already connected. We are already contacting these 500 Fortune 500 companies around the world. We've already establishing contacts, and we are providing them resumes for free. We're not even charging anything. And we're saying, this is our client. This is our student. Do you want to hire him? He has done all of these things. Yeah. And if I send you a resume with all those things that you have mentioned, and you have completed all of those things, and you have done your internship with us, you can easily earn, is 150 to 200,000 rupees per month, Indian rupees, is a good salary or not? Sorry? Like in India, if you earn 200,000 Indian rupees per month, is it a good salary or not? 2 lakh salary. Is it a good or not? Good, sir. Right? Do you want that or not? Yes, sir. Definitely. Definitely, yes. You should say absolutely yes. So then follow the pathway. Yeah. If you don't follow the pathway, you'll be stuck over there. But if you follow Okay. the pathway, they will elevate you. That's the only pathway. There's nothing Got else. it. So please be in contact. I've added you in that group. I want you to gather enough money so that you can go from India to Middle East, and from Middle East to UK or Europe or North America. That's where you have to go. Yes, sir. Okay. Thanks for your time, Ranjit, for coming in, and be in touch, inshallah. Okay. Thank you so much, sir. I'm coming, Shazir, towards you. Muhammad Usman, can you come online, please? Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam wa rahmatullah. How was your interview, the first interview with TikTok? Alhamdulillah, sir. Interview अच्छा हुआ है और बेसिक से क्वेश्चन से इंसिडेंट रिस्पांस एनालिस्ट का रोल है, उसमें जो है ना 30 मिनट्स का इंटरव्यू था और ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे, हाउ डीएनएस वर्क और लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एज अ वर्क किया, उससे रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कौन सी सर्विसेज मैनेज की हैं, और इसके अलावा कोई इंसिडेंट हैंडल किया है अपना प्रीवियस रोल में जो आप अलनाफे में था, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत बताया, फिशिंग एनालिसिस। सो अब नेक्स्ट जो है वो ट्यूसडे को इंटरव्यू है, सेकंड इंटरव्यू है, जो है टेक्निकल इंटरव्यू है। So tomorrow, come and sit with me, and I will prepare you for the technical part round of the interview, right? So send me the job description, and we will go and take a deep dive into the incident management process. So that when you will be able to explain to them each and everything as to the incident management process. Okay? All right, sir. But make sure that you complete the bash, the automation part, the Python automation, the Kubernetes, because I'm going to give you specific examples of those things. All right, sir. Okay, sir. Because TikTok, everything runs on serverless architecture. All right, sir. All right. Right? And All TikTok, right. and one of the things that you have to, and as I told you, TikTok is a huge company, and they are getting a lot of flank. And you can have to write it down. TikTok is, just tell them TikTok is a huge company. If I see TikTok user base, right? TikTok user base, if I try to find out, it's in global. Active users in US is 150 million. Like US has a population of 350 million. Half of the US population is sitting on TikTok. Can you imagine? Can you imagine like what's happening with TikTok right now?
So it's a huge behemoth. It's a huge company with loads and loads of data. And I believe it has, mostly active users, over 1 billion monthly active users. Like Facebook has 2.9 billion users. YouTube has 2.2 billion. Instagram is 1.4 billion. TikTok has 1 billion users. It's a big one. And it is slowly creeping into Instagram, into YouTube, into Facebook, all of these things, because they created a platform, short videos, short clips, and people are just consuming the content, wasting their time, essentially, right? And TikTok has been downloaded over 2.6 billion times worldwide, right? And in 2020, right now, it may be over 3 billion or 4 billion or something like that, right? So you can imagine this is a huge company. So tell them, I understand that TikTok is going through a very rough patch right now in North America, in Europe. But, if we can provide them assurances, and your role is incident response, right? Yes, sir. Incident response analyst. So you have to tell them, if given the opportunity, I would recommend that if we implement some of these best practices of ISO standard, like ISO 27035, ISO 27001, 27017 and 18 for user, for cloud data, for data security and data privacy, and create these robust controls as per the incident response controls, as per the 27035 and other ones, and anonymize the data and do some other wrangling of the data, then we can create an assurance, a climate of assurance around the world to ease these concerns of user data privacy, right? And I'm thinking about different aspects, because like this is a huge opportunity for me to be in a company which is going through phenomenal growth, but at the same time, monumental challenges. These are the keywords you have to use, Mohammed Usman. Phenomenal growth, but monumental challenges. All right, sir. We address these things. And, I have a strategy. So hear me out. Yeah, I have a strategy. I had this discussion with my mentor as well. And, in my view, if we deploy 27001, 27035, which is the incident response standard, and create and bring in some data anonymization and other techniques. And there's a lot of, and I know that your department is already doing all of these things, but if given the opportunity, I really would like to jump in and, provide you my feedback and my things of how we can do these things and create a culture of, data privacy and, data usability, and also create a culture of trust within these European agencies. Because you tell them like this, because one thing that these European agencies always follow and they always comply with and they always buy in are the ISO standards. The whole foundation of the user privacy and user regulation in the European Union and North America is standing on the pillars of ISO standards. And if we show them that we are following the same ISO standards through and through, and we have all the appropriate controls for data residency and data sovereignty for all of these different countries in use, if we can create these controls where these user data will only reside in the country and it doesn't leave their physical and logical borders, and it's anonymized and it's encrypted and tokenized, and we're using blockchain and all these kinds of things. There's a lot of things I have in my mind, and I can recommend you all of these things. Obviously, if given the opportunity, I can work on all of these aspects. This can help the company to ease, to go through this storm that they are feeling right now, coming from, especially from USA and from European Union and from, and from North American countries, so on and so forth. And we can ease the storm by utilizing these standards. Samajh aaya, Usman? This is very important for you. Yes, sir.
All right. You have to use these words carefully. Alright, sir. इसी तरह लिखो, ये सब जाके लिख लेना, write जी it सर. down and explain it to them. All right, sir. Okay. तुम्हें ठीक है बहुत सर. बहुत ज्यादा फायदा होगा. Okay. All So right, sir. इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा. Now send me the job description ताकि मैं job हाँ. description देख लूं, and then we will go through the drilling tomorrow inshallah. All Okay. right, sir. Sir मैंने job description आपको send कर दी है WhatsApp पे आपके. I'm looking it right now. This is the one that you just sent me. Yes, sir. Copy it, please. इसको copy कर लो ताकि इससे पहले कि वो हटा नहीं देना. ठीक है? All right, sir. All right, sir. How much are they paying you? सर पे का उन्होंने मुझसे बात की थी, लेकिन वो कह रहे थे पहले इंटरव्यू लेंगे, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे. लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि एक एवरेज सैलरी जो एक इंसिडेंट रिस्पांस एनालिस्ट एक्सपेक्ट करता है यूके में, तो वो मैं अभी उसके साथ जाऊंगा. तो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया उन्होंने. देखो इनके, अगर मैं इसको देखूं, ठीक है ना, if I look at all the things, ठीक है, what does it do? There are 160 applicants जो इधर गए, and if you really want to stand apart from all of these guys ना, जो मैंने statement दिए ना, copy that statement. This is going to help you a lot. ठीक है? देखो, for short-term mobile video, our mission is to inspire creativity and bring joy, right? I mean, many people are earning millions through TikTok. ठीक है ना? अगर मैं TikTok का सिर्फ revenue देखूं ना, कि what is a TikTok revenue? So TikTok का revenue अच्छा खासा है. $8.75 billion in 2023. Okay, so you can imagine that TikTok is basically going at a very high rate. 8.75 billion in 2023. This includes ads of various formats appearing on desktop, laptop, mobiles, devices, smartphones, and tablets, and other internet-connected devices. This year revenue marks a 46.8% increase from 2022. Dekho, there is a problem. And tell them this thing that if we create this this culture of enhanced response, enhanced security, enhanced focus on security controls and all of these things, I can tell you that we will have a very good legal standing, you know, within European Union courts and the North America. It's going to take them a long, it's going to take them, they will have a very difficult time, you know, de-registering or, you know, this app from their countries. It's not going to happen. I'm telling you right now, but it needs to be done. And, you know, I'm willing to play my part if given the opportunity, because this is a challenge and I really would like to accept this challenge. ठीक है, तुमने इसको बताना है. So you can see कि ये बड़ी कंपनी है और digital ad spend जो है ना currently बढ़ रहा है इनका, and Gen Z सबसे ज्यादा बैठती है इसके ऊपर, जो नई generation है. ठीक है ना, मतलब कि constantly, it's a very addictive app. मेरे पास तो नहीं है इसका access, but people go crazy on this thing. ठीक है, और you can see कि इनका revenue भी बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, 2020 में क्या था, उसके बाद क्या हुआ, देखो, look at this. Look at this. Yes, in 2024 it's going to be $11 billion. I mean, बैठ के पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना. So it's the fastest growing social media platform there. It's no surprise that TikTok US revenue has also been increasing. US को बड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर, इसको गिराने में, अब as per their laws, ठीक है ना, unless and until कोई executive order आ जाए US गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि फिर कोर्ट में चैलेंज हो सकता है. ठीक है, so this is not going to be easy for them कि भाई चाइना के साथ फड्डा हो गया तो हम उसको गिरा रहे हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, so I can tell you right now कि तुम्हें अपने आप को थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को थोड़ा सा तैयार करना है इसके लिए, so that you can tackle this properly, inshallah. Okay, inshallah sir. यहाँ पर जो बाकी सारी चीजें हैं, we will go through them tomorrow. ठीक है ना. Alright sir. ये बहुत आसान है. I will tell you all of those things. फिक्र नहीं करो, बड़े अच्छे तरीके से. ठीक है ना. Alright sir. The examples and everything. You have already done these things, packet analysis, सब तुमने. Yes sir. Yes. Why shark? Yes. सब किया हुआ तुमने. ठीक है ना. Yes sir. Yes sir. तुमने emphasize करना है कि भाई automation. बोलो भाई, I'm going to use automation. Alright sir. There is no other way to keep on checking for the incident. If we have automation scripts running, we'll keep on checking what is happening. ठीक है, इसके बारे में कल बात करेंगे. ठीक है. Alright sir. Okay sir. ठीक है ना.
और कोई तुम्हें जॉब की कहीं से और से कॉल आई अभी क्या? नहीं सर, अभी एक कंपनी थी इंटेन ग्रुप के नाम से, यहाँ पे यूके में है, तो वहाँ अप्लाई किया था। की कॉल आई थी। वो एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू हुआ था 20 मिनट्स का, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। और सर वो अकॉर्डो ग्रुप है, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था इंटरव्यू के लिए वो एचआर ने सिर्फ स्क्रीनिंग कॉल के लिए बुलाया था अभी 2 डेज 2 दिन पहले ही, तो वो भी दिया तो अभी। यहाँ पर सजाद भी काम कर रहा है वो? जी 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 जी, बिल्कुल वही, तो सेम सेम रोल के लिए। जी सर। That's good, माशाल्लाह. They have the same role available. यस सर। कितने रोल्स इनके पास? I mean, जी सर, ये आई थिंक सो ये लोकेशन डिफरेंट थी। location different. So they have multiple locations, right? That's good, जी mashallah. सर। That's good. That's good to know. That's good to know. ठीक है. यस सर। Be in touch, and if you need anything, let me know. And ऑलराइट we'll सर। do this interview tomorrow, inshallah. Okay? ऑलराइट सर, ओके सर, So थैंक यू that will सर। be the topic for tomorrow. ठीक है, inshallah. ऑलराइट। Okay. Who's next? और कौन था यहाँ पर? शाहजेब. तुम आ जाओ भाई. शाहजेब. Where are you, शाहजेब? हाँ भाई. तुम्हारी एक जॉब माशाल्लाह हो चुकी है. You've already secured one job. ठीक है ना? अगेन योर स्टोरी वाज, व्हाट इज योर स्टोरी? मुझे अपनी स्टोरी बताओ भाई. तुम कहाँ पे, किधर, पाकिस्तान से कैसे गए, क्या किया तुमने? व्हाट हैव यू डन? फसल में जब बिल्कुल नाफे स्टार्ट हुआ था, मैं जब से ही आपका स्टूडेंट हूँ, जब बिल्कुल बेसिक स्टार्ट हुआ था नाफे का, तो मैं जब से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। उसके साथ साथ फिर मैंने अपने मास्टर्स की स्टडी भी, मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरीके से बाहर जाके अपनी पढ़ाई स्टार्ट शुरू करूँ। तो मैंने जब भी आपसे उस टाइम पे मशवरा किया था, और फिर उसी टाइम से आपके साथ कांटेक्ट में था मैं, तो साथ साथ अपने कोर्सेज भी कर रहा था जिस टाइम बिल्कुल शुरू हुए थे। उसके बाद फिर प्रोग्राम आपको बढ़ता गया, जैसे कैट आया, उसके बाद डेवऑप्स एडवांसमेंट टेक, साथ साथ इसको भी कर रहा था। और फिर मुझे एडमिशन मिल गया था जर्मनी में मास्टर्स का, तो मैं तो 2020 में भी जर्मनी आ गया था। और फिर साथ साथ पढ़ता भी रहा, साथ साथ अपना मास्टर्स करता रहा। तो अभी रिसेंटली मेरा मास्टर्स अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। थीसिस मैंने भी सबमिट किया है फेब 1 को, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा हो गया क्लियर। उसके साथ साथ मैं इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे मेरे इंटरव्यू हुए भी, और सेकंड राउंड तक भी मैं गया हूँ। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे मैं अपनी एक पार्ट अपनी जॉब भी कर रहा था यहाँ पे बर्लिन में, अपनी वर्क स्टूडेंट जॉब कर रहा था, जिसमें हम 20 आवर्स पर वीक हम काम कर सकते हैं। वो जॉब कर रहा था मैं, उसके साथ साथ अपनी डिग्री कर रहा था, और ये कुछ कोर्सेज अपने नाफे के जो है ना लेके चल रहा था। तो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी थी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया इसमें ना। तो इसमें अच्छी बहुत बड़ी कंपनियों से भी आया, एक दो कंपनीज में मेरा भी इंटरव्यू होल्ड पे भी है, इसका मैंने आपको बताया था पहले। हाँ, तो डिलॉयट वगैरह में. डिलॉयट में अभी होल्ड पे है, तो उन्होंने खुद ही उसको क्लोज कर दिया था, कहा था कि हमारा इंटरनल ये हुआ है, कोई डिसीजन हमने लिया है, तो इसकी वजह से हम होल्ड पे हैं। फिर जैसे ही ये पोजीशन दोबारा खुलेगी तो हम आपको इंशाल्लाह टॉप पे रखेंगे। और जहाँ मैं अभी जिस करंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ भी तकरीबन मुझे हो गए 10-11 महीने। तो आज मेरी अपने मैनेजर से बात हुई थी, तो उन्होंने जो भेजा, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा। जॉब मिली क्यूए के अंदर मिली यहाँ पर पढ़ने से, राइट? जी जी जी। देखो, मेरा मशवरा होगा कि सिक्योर दैट जॉब, बिकॉज वंस यू गेट द ब्लू कार्ड then you can keep on applying for other positions, right? तुम ऑलरेडी DevOps पढ़ रहे हो, SysOps पढ़ रहे हो. अगर तुमने Kubernetes सर्टिफिकेशन कर ली, तुमने Kubernetes ना, अगर तुमने सिर्फ Kubernetes की जो सर्टिफिकेशन है, Kubernetes खाली ये नहीं कि तुम सिर्फ Kubernetes करके बैठ गए, ठीक है ना? तो अगर तुमने सिर्फ वो निकाल ली, तुमने साथ में बैश पे पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ तुम करके चले गए, और तुमने अगर AWS के ऊपर जो वहां पर जो SysOps एडवांसमेंट ट्रैक में जो हमने डिप्लोमा SysOps की किया है, तुम अभी क्या, तुम्हारे पास क्या है, DevOps से SysOps दोनों मिलाकर है? डेवऑप्स है, और मेरे पास वो कैट है। कैट के बाद मैंने डेवऑप्स लिया था। हाँ, तो ठीक है. तो कैट के अंदर जो जो इलास्टिक सर्च के कोर्सेज हैं वो सारे खत्म करो, कंप्लीट ऑल ऑफ दोस कोर्सेज. उसके बाद जो है ना, फिनिश अप लाइक ऑल द DevOps कोर्सेज. यू शुड बी एबल टू फाइंड लाइक गुड जॉब तुम्हें मिल सकती है फॉरन से, बड़े आराम से. देखो, ऑपरेशंस की जो रेंज है ना, जो रेंज शुरू होती है ना यहाँ पर, जो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर इस जर्मनी में, तो क्यूबरनेटीज सर्टिफाइड अगर बंदा है कोई,
ऑपरेशंस के अंदर डेवऑप्स इंजीनियर है, तो ये उठाता है, दिस इज इट्स रेंज। ठीक है, पे स्केल में अगर तुम जाओ ना, तो पे स्केल में अगर तुम देखो तो डेवलपमेंट डेवऑप्स का ना 44 to 82, एवरेज सैलरी 61 तो उसको मिलती ही है। ठीक है ना, यानी कि जीरो एक्सपीरियंस पे 43 पे होता है, मिडिल यहाँ पर आ जाता है क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस तो यहाँ से काउंट हो रहा है, और ऊपर तक तुम 81 पे जा सकते हो। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे पास एक अच्छा वो है अभी कि तुम किधर कहाँ कैसे जा सकते हैं ना। अगर मैं इंडीड लिखूं और वर्ल्ड वाइड और इसमें जाऊं मैं जर्मनी के अंदर, इफ आई गो टू जर्मनी एंड इफ आई जस्ट टाइप इन डेवऑप्स और क्लाउड, इसमें बड़ा अच्छा काम है। ठीक है ना, 14,000 देखो नौकरियां आती हैं इन जस्ट ऑन जस्ट वन जॉब पोर्टल। लिंक्डइन इज डिफरेंट। डेवऑप्स इंजीनियर, व्हाट डज MWD मींस, क्या मतलब है इसका? ये मेल फीमेल और के लिए ये यूज करते हैं, मतलब अच्छा, ये 100% रिमोट है। देखो, दिस इज 100% रिमोट। 45 to 60,000 $60 €60 per hour, राइट? ठीक है ना, सही है ना? तो यू कैन सी कि ये डेवऑप्स रोल में तुम क्या कर रहे हो। यू विल डिजाइन आर्किटेक्चर्स सच एज इवैल्यूएटिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ये वो सब चीजें। सो ये सब चीजें डॉकर एज अ कोड, ठीक है, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, डॉकर, क्यूबरनेटीज, पाइपलाइंस बनाना, सब कुछ करना। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें बड़े आराम से मिल सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो ना। सो अगर तुमने वो खत्म कर लिया, अभी इसको पकड़ लो, गेट द वर्क परमिट डन, so that you have the work permit, and then you can move forward towards 65 to 70। उसकी सईद बदल की कितनी की जॉब लगी थी जब यहाँ से 65 पे गया था ना वो? 67 स्टार्टिंग 60। उसकी स्टार्टिंग इससे हुई थी आई गेस। हाँ, तो तुम्हें स्टार्टिंग इसमें मिल सकती है। अगर तुमने डेवऑप्स खत्म कर दिया, तुम 70 तक जा सकते हो। मैंने अब इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि अब डिग्री वाला मामला खत्म हो गया, तो अब मेरे पास ये कि टाइम है, मैं काफी इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसमें। बीच में तभी रोका था क्योंकि इंटरव्यू तो हो रहे थे मेरे, लेकिन मैंने रोका इसीलिए था इसको थोड़ा सा। तो हाँ अभी मतलब एक वीक पहले फिर मुझे अब खोल जो दो है अपने आप उन्होंने को, खोल अप्रोच दो किया। अपने आप को इंटरव्यूज के लिए खोल दो, और अभी तुम पाकिस्तान में भी हो, यूटिलाइज दैट टाइम टू द मैक्स सो दैट यू कैन गो थ्रू फास्टर, जल्दी जल्दी तुम निकल सकते। दैट इज माय रिकमेंडेशन। ठीक है, सो पुश इट थ्रू एंड पुश इट थ्रू एट ऑल कॉस्ट सो दैट यू कैन कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ताकि जल्दी जल्दी निकल के बोलो यार मुझे बस ना अब एडमिशन लेना है, मतलब कि मुझे अब ये चाहिए, आई वांट टू सिक्योर दिस पोजीशन। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो सिक्योर करो अपनी पोजीशन ताकि सो दैट यू कैन कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। दैट इज माय रिकमेंडेशन टू यू। ठीक है, अच्छा, एक कंपनी ने मुझे अप्रोच किया था, उसकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भेजी थी, अगर आप अभी टाइम है तो देख लेंगे तो फिर मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। What does she, वो क्या इस मैसेज क्या समझ नहीं आया मुझे? What does it this mean? अच्छा, इसमें जो यहाँ आज कंफर्मेशन हुई है उसका मैं आपको बता दूं। मैंने उनसे पूछा था कि ये दोबारा मेरे स्टूडेंट स्टेटस ही दोबारा, स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट दोबारा दे रहे हैं या फुल टाइम का दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला तो यही कि फुल टाइम का। अगर फुल टाइम है और जो तुमने मुझे दिखाया है ये वही इंटरव्यू है जो उस बंदे का था, बस यहाँ पर वो वन ट्रस्ट है। वन ट्रस्ट का मतलब होता है सॉक। मैं तुम्हें बता दूंगा सॉक क्या चीज है। व्हेन इज दिस इंटरव्यू, कब है? अभी तो इसने मुझसे पूछा था ना कि तुम्हारा मेन फोकस क्या है, कि प्रोडक्ट साइड पे है या बोलो दोनों है, ऑर्गेनाइजेशन। बोलो मेरा फोकस प्रोडक्ट पे नहीं है, इट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशंस, व्हाटएवर द केस इज। आई एम नॉट प्रोडक्ट स्पेसिफिक। आई थिंक देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट प्रोडक्ट स्पेसिफिक। बोलो कि आई एम नॉट प्रोडक्ट स्पेसिफिक, I am organization specific, organization cloud. The context, you need to define the context. What is the context? Is the context is the product, organization, processes, what is it? Because that's where you implement all these security controls. So I have done implementation on products, on organizations, on processes, on data centers, on cloud. Whatever you throw at me, I can get it done. ठीक है, सो बात करो, जॉब अच्छी है, ठीक है, एंड अगर वो दे रहे हैं अच्छे, गो फॉर इट। और इनका मैंने देखा ये
ई कॉमर्स सोल्यूशन देते हैं बड़े बड़े ब्रांड को, जैसे जिसमें ई ऑडी कॉमर्स है। सोल्यूशन देते हैं तो ये पीसीआर डीएसएस के ऊपर काम कर रहे होंगे लाजमी। अगर ई कॉमर्स पे है ना ये, तो दे आर सर्टेनली वर्किंग ऑन पीसीआर ऑन ये कॉमर्स टूल्स देते हैं मतलब कंपनी को बड़ी बड़ी। देखो ई कॉमर्स टूल्स का मतलब होता है कि पेमेंट प्रोसेसिंग। ई कॉमर्स में क्या है, पेमेंट प्रोसेसिंग हो रही है ना, ठीक है। तो वो कैसे होगी, और इनकी वेबसाइट पे देखो यहाँ पर दिया भी है इंजीनियरिंग मैनेजर की कोई पोजीशन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट की कोई पोजीशन है, दो हैं, एक बर्लिन में और एक म्यूचन, क्या कहते हैं उसको, म्यूनिक। म्यूनिक, ठीक है ना। और नहीं म्यूनिक नहीं लिखे थे, MUNCHEN, इसको म्यूनिक पढ़ेंगे, बायरन जर्मनी, राइट। वो म्यूनिक ही है, इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। नहीं नहीं, दिस इज मैं देखता हूँ सब, तो हो सकता है फिर एक सिटी हो, कोई और हो। कोई और सिटी है भाई, ठीक है ना। हाँ तुम सही कह रहे हो, इन्होंने इस बार इन म्यूनिक, द म्यूनिक द सेम, म्यूनिक इज इन इंग्लिश फॉर जर्मन म्यूनिक। हाँ वो म्यूचन जो है ना वो जर्मन में लिखते हैं और इंग्लिश में हाँ म्यूनिक, म्यूनशन लिखा हुआ होगा इन्होंने। ठीक है, सही है। तो दैट इज अ पोजीशन जो उनके पास है। अगर मैं देखूं आईटी मैनेजर की पोजीशन देखूं उनके पास, आईटी एप्लीकेशन इंजीनियर की, ठीक है। तो इट अपेयर्स के इनके पास जो पोजीशंस हैं उन सब में वो लोग वो मांग रहे हैं, एजाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, डेवऑप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, नोड जेएस, रिएक्ट, मोंगोडीबी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। और इसके बाद आईटी एप्लीकेशन इंजीनियर जो है वो भी इसके ऊपर काम कर रहा है सारा। सो या आई मीन दिस पोजीशन रिक्वायर्स ऑल द की थिंग्स जिस पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है, जो तुम्हें ऑलरेडी काम आता है, तो बोलो भाई सब चीज़ें मुझे आती हैं, ठीक है। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो जो SOC 2 है जो मांग रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस SOC 2, तो जब तुम्हारा वो आएगा ना इंटरव्यू, तो बोलूंगा कि तुम बोलना कि भाई मैं इस तरह का ऑडिट करूंगा कि एक ही ऑडिट से SOC 2 ISO सब हो जाएगा, सब एक ही, वो जो मैंने लड़के को तैयारी कराई थी ना वो पढ़ लेना। ठीक है, जो अभी सबसे पहले करवाइए आप। नहीं नहीं, इससे पहले उस दिन मैंने एक लड़के को ना, ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का था ना जिसको मैंने तैयारी करवाई थी उसको, सो फॉलो दैट, ठीक है, ठीक है, फॉलो दैट, ठीक है, इंशाल्लाह दैट विल हेल्प यू, ठीक है। ठीक। ठीक है, जाओ अपनी तैयारी करो इंशाल्लाह, गो एंड वर्क हार्ड एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इंशाल्लाह, ठीक है, सही है। हारिस, वेयर आर यू हारिस, कहाँ हो भाई तुम? सलामुअलैकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह भाई। भाई तुम्हारा वो तैयार हो गया है, तुम्हारा लेटर भी तैयार है, तुमने शायद देख भी लिया होगा कि मैंने सेव किया हुआ है तुम्हारा उसमें, अपने टास्क बार में तो मुझे नजर आता है, तो जब वो हो जाएगा तो फिर मैं उसको हटा दूंगा, ठीक है ना। जी जी इंशाल्लाह इट्स ऑलरेडी डन, इंशाल्लाह। वो तुम जो है ना कर सकोगे इंशाल्लाह। व्हाट इज योर क्वेश्चन, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है अभी? फैसल भाई अभी मैंने आपको एक अभी अमेजोन से मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया है, पर वो मैंने आपको बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन है ना, तो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं थोड़ा आगे पीछे हो रहा था उसके लिए कि फुल टाइम जॉब के लिए रिस्क नहीं करना चाहिए। अगर 12 मंथ उनको इंटरव्यू करना है मुझे बेसिकली थर्सडे को। देखो दो चीजें हैं, इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू कैन जंप, ठीक है ना। इट ऑल कम्स डाउन टू द कॉन्फिडेंस लेवल ना। जी ऑलरेडी जहां तुम काम कर रहे हो दैट्स अ परमानेंट पोजीशन, राइट। जी अगर तुमको कम मिल रही हो तो मैं बोलूंगा नहीं, जैसे कि एक लड़का आया उसने कहा मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैंने कहा भाई कम मिल रहे हैं तो मत जाओ, ज्यादा मिल रहे हैं तो तुम जा सकते हो, ठीक है ना। ये डिफरेंस है दोनों में। तो इट ऑल कम्स डाउन टू के व्हाट डू यू रियली वांट टू डू। तो वो 65 एन आवर दे रहे हैं, पर उसके साथ कोई बेनिफिट्स नहीं है। सो लाइक 65 एन आवर्स लाइक 120 ईयर बनता है अराउंड 120 135 समथिंग, अराउंड देयर बनता वेल है तो ज्यादा जो मैं काम नहीं करोगे ना, उसमें ये भी तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने वीक्स काम होगा, क्योंकि जब छुट्टी होगी वो होगी तो तुम्हें तो काम नहीं, उसके पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। और दूसरी वो है जो मैंने आपको भेजी थी, DRW ट्रेडिंग फर्म है। तो बेसिकली वहाँ पोजीशन है सिक्योरिटी इंजीनियर हु आल्सो नोज डेवऑप्स। हाँ तो तो मैंने कहा ना कि वो सिक्योरिटी के अंदर डेवऑप्स SysOps सब मर्ज कर रही है। तो That वो is why- बोल रहे हैं कि बेस पे है 140K एंड इट कुड गो अप टू 210। वो अच्छी है, मतलब कि वो एक अच्छी है, ये फुली रिमोट। मैं खोल फुली के रिमोट देखता हूँ। जी जी। इसका इंटरव्यू कब? उसका इंटरव्यू आई थिंक नेक्स्ट वीक हो जाएगा, पर वो मैं अपना वाला रेज्यूमे देना नहीं चाह रहा था जो आप मेरा नया बना रहे ना,
तो वो मैं उसको सेंड करूँगा कि वो थोड़ा डेवऑप्स फोकस्ड है थोड़ा ज़्यादा, तो वो मुझसे बोल रही थी अगर आज आप सेंड कर दें, तो मैंने उसको बोला था कि वेट करने के लिए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें भिजवाता हूँ फिर। ठीक है, बस ये चल रहा है। बस ठीक है। ये मुझे भी तुम्हारा हो जाए। मुझे भी TRW वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि फुल टाइम है और डायरेक्ट हायर है वो भी, और उसकी पे भी ज़्यादा है, और $30,000 बोनस है ऑन द साइड। तुम्हें बोनस क्या साइन ऑन बोनस दे रहे हैं? नहीं नहीं, उन्होंने बोला ईयरली बोनस जो मिलता है 30,000। तो बेसिकली स्टैंटन, व्हाट इज स्टैंटन हाउस? ये बेसिकली वो है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, पर ये मैं जो हायर हूँगा वो DRW पे हायर हूँगा, मतलब वो बेसिकली उनकी मदद कर रहे हैं किसी को हायर करवाने के लिए उनकी कंपनी में। नहीं नहीं, तो तुम स्टैंटन में काम करोगे, डीआरडब्ल्यू में काम करोगे? मैं DRW में काम करूँ। सो डीआरडब्ल्यू यूएसए क्या करता है, मैं ये देखना चाहता DRW बेसिक मैंने जो देखा, ये ट्रेडिंग फर्म है और रियल एस्टेट में भी इनका काम है, और शिकागो में है इनकी हेडक्वार्टर्स। हूँ। हाँ ये सही है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे हैं, मतलब क्रिप्टो के अंदर ये सब। हाँ इसके लिए तुम्हें फिर पढ़ना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। इनका एक्सचेंज ट्रेडिंग वो है, ठीक है ना, कमोडिटीज और लिक्विडिटीज के ऊपर काम करते हैं। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन हाँ ठीक है, ये पैसे अच्छे दे रहे हैं ये लोग। ये जो इस तरह की फर्म्स होती है ना, ये टैलेंट को रखते हैं और पैसे अच्छे देते हैं। ठीक है। और इनकी जो सॉल्यूशंस हैं वो इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो सारा काम कर रहे हैं। इनका कैपिटल वेंचर भी है, यानी कि ये मुख्तलिफ कंपनीज बनाते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो ये भी इनका काम है। इट्स अ बिग ट्रेडिंग ग्रुप है ये। हाँ ये क्या, अच्छा ये फैसल भाई, मैं तो मुझे समझ ये इसके अंदर कोई ऐसा काम है जो मतलब अलाउ नहीं है इस्लाम के अंदर, तो क्योंकि अगर पहले ही पता हो ना तो फिर इसके अंदर मैं हाथ ही नहीं डालता। पढ़ना पड़ेगा यार कि ये क्या करते हैं ना। ठीक है, इनके पास क्या है कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब हम्म, कि शेयर्स लेते हैं और शेयर्स बेचते हैं ना। जी जी। इनका ये काम है, लेकिन इन्होंने अपने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि जो नैनो सेकंड लेवल के ऊपर भी ना लेटेंसी को नहीं आने देता ना। सब सब नैनो सेकंड सब नैनो सेकंड, ठीक है ना। तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि इनका जो वो है ना, क्या नाम है, जो क्लाउड होगा बड़ा जबरदस्त किस्म का चल रहा होगा। ठीक है। हम्म, और इन्होंने डिजिटल एसेट्स होल्डिंग की हुई है, जिसके अंदर इन्होंने ब्लॉकचेन का एक डेटाबेस बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। अ, क्या ये हलाल है, हराम है? यू हैव टू आई हैव टू रीड मोर अबाउट इट, आई कांट जंप इन। अगर कोई बैंक है तो क्या है, क्या कौन क्या करता है ना, सो आई हैव टू हम्म। रीड, फिर मैं तुमको बता सकता हूँ। अच्छा आमतौर अच्छा। पे जो तरह की फर्म्स होती है ना, ट्रेडिंग फर्म्स, वो 2 लाख 2.5 लाख पैकेज देती है। आई एम नॉट सरप्राइज। ठीक है। जैसे सकोया कैपिटल है, वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, कंपनीज खरीदते हैं। ये जो है ना, ये एक्विजिशन करती है। ठीक है ना, ये कंपनीज की एक्विजिशन करती है, उनको स्पिन अप करती है, उनको फिर बना के बेच देती है। सही है। ठीक है ना, ये इनका काम है। तो जब 2008 में जब लीमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था, उस वक्त मैं यूएस में ही था। तो इन लोगों ने लीमन ब्रदर्स के बहुत सारे एसेट्स को खरीदा, और उसके बाद जो है ना, उसको, उनके जो एसेट्स थे, जो भी थे, उनकी सोल्यूशंस या जो भी थी, ठीक है ना, और ओके। उसके बाद उससे उन्होंने बिजनेस शुरू किया। तो ये आईटी कंपनी है, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं है, लेकिन आईटी कंपनी है। सही है। ओके अगर ये अपनी सोल्यूशंस बना के लोगों को बेच रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये करते हैं काम। ठीक है ना, इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट्स का मतलब है अफ्रीका में, इधर उधर सब जगह ना, एशिया सही। में, ओके। इधर। इनका काम एनर्जी एंड एग्रीकल्चर के अंदर है, और मुख्तलिफ दूसरी चीजें हैं। तो पढ़ना पड़ेगा इसके ऊपर कि भाई ये क्या करते हैं ना, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं तुमको बता सकता हूँ। कांट जंप द गन यार, इट्स नॉट। मीनवाइल ये कि मैं इनको रेज्यूमे सेंड कर दूंगा आज ही, अगर आप मुझसे रेज्यूमे तुम भेज इंटरव्यू। दो। हाँ, तुम इसके बाद मैं तुम्हें, जैसे मैंने कहा ना, मैं तुम्हें 4 बजे तक भिजवा रहा हूँ, तो इसकी खत्म कर रहा हूँ, बस मैं थोड़े से सवालात ले लूँ यहाँ से, फिर मैं तुमको भिजवा दूंगा। यू कैन यूज दैट एंड देन इंशाल्लाह टेल देम कि भाई यू रेडी, एंड लेट्स सी व्हाट दे से इंशाल्लाह। अच्छा एक और बात फैसल भाई, वो मैंने आपको बताया था ना एवर सोर्स वाला, जो मैंने उसको बोल दिया था, थोड़ा नाराज हो गया था मुझसे वो। हाँ हाँ, क्या हुआ उसको? हाँ तो वहां पे मुझे रिक्रूटर ने मुझे एक उसको पता नहीं था, दूसरे रिक्रूटर ने मुझे रीच आउट करा थ्रेट हंटिंग रोल के लिए ना। तो मैंने हाँ उसको बोला, मैं भाई मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ यहाँ पे। तो बोलता है नहीं नहीं ये दूसरी पोजीशन है। तो खैर वो वही सेम मैनेजर था,
शॉन नाम है उसका। तो मुझे वापस आया, बोलता है कि ही टोल्ड मी दैट ही ऑलरेडी इंटरव्यूड यू, और वो मतलब वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता उसके बाद वो, तो थोड़ा नाराज हो गया काफी वो। असल में तुमने उसको उससे उससे बहुत पिंचिंग सवालात कर लिए ना, ठीक है। वो जो है ना एक बड़ी जबरदस्त चीज है। अ, एक जो है ना उनका एक वाकया है, मैं तुमको बताता हूँ। उसके बाद जो है ना इंसान जो है ना फिर ये सारे जो है ना जो हमारे ये जो सोशल मीडिया पे लोग बैठते हैं ना, जी तो इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला है। ये हलाल को हराम, हराम को हलाल कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो सिर्फ हराम को हलाल किया हुआ है, और हलाल को हराम की तो वो तो बात करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है ना। एक एक बड़ी जबरदस्त चीज है। गिव मी 1 मिनट। इसका क्या नाम था? एक मिनट यार। तो तुम्हें जो है ना ये एक वो था बहुत बड़ा एक जो स्कॉलर्स है ना, स्कॉलर्स, उनको उनसे अल्लाह ताला ने अहद लिया हुआ है कि द प्लेज ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी कि उनको सच बोलना ही बोलना है, ठीक है ना। अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो अल्लाह ताला उनको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट ऑफ बिकमिंग अ स्कॉलर यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ, बिकॉज अगर तुम झूठ झूठ बोल रहे हो, सच नहीं बोल रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। बिकॉज आई एम बिकमिंग अ स्कॉलर, आई हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल टू एवरीवन। तो इनका नाम था अबू हाजिम। अबू हाजिम जो थे ना, ये ताबी थे बहुत मशहूर, ठीक है ना। ये बड़े बड़े सहाबा के साथ इन्होंने इल्म हासिल किया, सब कुछ किया। तो उस एक जगह का जो वो था ना, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, सुलेमान बिन अब्दुल अल मालिक जो एक खलीफा था, उसने जो है ना मदीना को विजिट किया, और उसने कहा कि मुझे बुलाओ, जो है ना मेरी दरबार में उसको बुलाओ। यानी कि ना खलीफा तो मैं नहीं कहूँगा, किंग कहूँगा उसको, ठीक है ना। वो उसने कहा कि भाई इसको बुलाओ, हाकिम था, यानी कि समझो कि जो ऐसे बंदे को बुलाओ जो किसी साहबा से मिला हो, या साहबा से ताबी है ना, ताबी है। जी उसने उसको बुलाया, उसने उसको पूछा कि भाई कि ना कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो स्कॉलर्स है ना, वो क्या करते हैं, वो साइलेंस रहते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस, यानी कि कहते हैं कि यार हम खामोश रहेंगे बेहतर है। अभी सब लड़ रहे हैं ना आपस में, और ना उम्मत खराब है, तो हम खामोश रहेंगे, ठीक है ना। तो बड़ी मुश्किल से शेख सुदैस को होश आया, तो वो उसने सच बोलना शुरू किया। जब सच बोला तो फिर उसको भागना भी पड़ा। सही है, अच्छा है, भाग, सच बोल के भाग जाओ, ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, बजाय इसके कि तुम वहां पर अपने आप को मुश्किल में डालो। लेकिन बोलो तो सही ना, ताकि लोग, क्योंकि लोग तुम्हें सुनते हैं, इमाम काबा को। तो सलमान अब्दुल अल मालिक ने जो है ना शेख अबू आजिम से पूछा कि भाई कि ना अ, पूछा कि कंप्लेन किया उसके भाई कि जो है ना एक बड़ी जबरदस्त चीज थी, मैं कि वाई डू वी फेयर डेथ। उसने कहा कि भाई हमें मौत से क्यों डर लगता है। सलमान अब्दुल मालिक ने शेख अबू आजम से पूछा, हमें मौत से क्यों डर लगता है। तो अबू आजम ने एक बड़ी जबरदस्त बात की, उसने कहा बिकॉज यू हैव बिल्ड दिस वर्ल्ड एंड डिस्ट्रॉयड योर हेयर आफ्टर। उसने कहा तुमने दुनिया को बना लिया है, और जी तुम और आखिरत में कुछ नहीं बनाया, तो दुनिया बना ली ना। तुम दुनिया में झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो तुमने दुनिया बना ली है अपनी, ठीक है ना। आखिरत में तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो दुनिया में यहाँ लोग 2 पैसे कमाने के लिए हर चीज को हलाल कर देते, ठीक है। बिल्कुल। सो वो जो है ना यूट्यूब की जो इनकम है उसको हलाल कर देंगे, बिजनेस हलाल कर देंगे। आई मीन दे विल जस्ट से कि भाई हलाल है। हमें हाँ बड़े बड़े स्कॉलर्स को मैंने देखा भाई, जो जो जय्यद स्कॉलर्स हैं, बोलते हैं नहीं, ठीक है ना, भाई सीधा सीधा एक डिराइव करना। देखो ये जो कुरान है ना, कुरान वो हमारे मार्खम मस्जिद में, ये कुरान है ना, ठीक है। हमारे मार्खम घर के पास मार्खम मस्जिद है, तो वहां पर ना एक तामिल गुस्से में आया, और उसने ना गाड़ी लोगों पे चढ़ा दी मस्जिद में फजर के टाइम पे, नशे में था, कुरान जल फाड़ के फेंक रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना। एक नमाजी के ऊपर वो भी चढ़ा दी। मेरे हाथ लगता था तो मैं उसको बराबर कर देता। उस दिन मैं मस्जिद में था नहीं, तो जो है ना बस उसको पुलिस पकड़ के ले गई, और उसने कहा कि भाई वो पाकिस्तानी की मस्जिद है ना, उसने कहा ये पाकिस्तानी ने बड़ी बॉम्बिंग की, ये किया वो किया, और हम तामिल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसने सही कहा, लेकिन उसको मस्जिद में हमला नहीं करना चाहिए था। वो तो पाकिस्तान फौजी हैं, पाकिस्तानी फौजी सारे फारिग हैं, ठीक है ना। एनीवे पॉइंट है इसके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ना जब इंसान अपनी दुनिया बना लेता है, तो आखिरत में इसको कुछ नहीं होता, तो उसको मौत बुरी लगती है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि बिकॉज यू हैव बिल्ड दिस
तो इसलिए यू हैव ब्यूटिफाइड योर दुनिया एंड यू नो कि व्हेन यू गो देयर विल बी जस्ट रूइन, बंजर, कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग फॉर यू। तो सुलेमान रिमार्क्ड, आई थिंक यू आर राइट। सुलेमान अब्दुल मालिक ने खुद कहा कि मैंने लिखा हुआ सब, उसने कहा आई थिंक यू आर राइट, कि तुम सही कह रहे हो। देन ही आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ रिटर्निंग विल आवर्स बी टू द हियर आफ्टर। उसने फिर उसने कहा, हाकिम ने कहा अबू हाजिम से कि भाई तुम्हारी नजर में हमारी क्या, हमारे साथ क्या होगा? तो उसने कहा फॉर दोज हु डिड वेल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना, विल बी लाइक समवन रिटर्निंग टू हिज होम एंड फैमिली। उसने कहा कि जो इस दुनिया में अच्छे काम करेगा, ठीक है ना, सच बोलकर, सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट, कोई नहीं, ठीक है ना, तो उसकी कामयाबी उसको वो ऐसा लगेगा अपने घर अहलो अहल, अल्लाह ने फरमाया ना कि जब तुम जाओगे जन्नत में तुम्हारे अहलो अहल सब तुम्हें वहां मिलेंगे, ठीक है ना, सही है ना। एज फॉर हु डिड ईवल, उसने कहा एज फॉर हिम हु डिड ईवल, उसने कहा और वो जो गलत काम करता आ रहा था, लोगों को धोखा दे सब कुछ कर रहा था, इट विल बी लाइक अ रन अवे स्लेव रिपोर्टिंग बैक टू हिज मास्टर। उसने कहा वो जो है ना, जो एक गुलाम भाग जाता है ना, और जब उसका मालिक पकड़ के लाता, क्या करते हैं मालिक उसके साथ? मारता है ना उसको, वहां फरिश्ते बहुत मारेंगे, ठीक है ना। तो दिस ब्रॉट टेयर्स टू सुलेमान आइज, सुलेमान जो है ना वो रोना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो उसने कहा कि पता नहीं मेरे लिए, मेरे साथ अल्लाह ताला क्या करेगा ना। अबू हाजिम रिसाइटेड द वर्स, अबू हाजिम ने कहा कि उसने कुरान की आयत पढ़ी, ठीक है। उसने कहा द राइटस विल बी इन द ब्लिस एंड द लिबर्टिनिस्ट विल बी इन द फायरी फर्नेस। यानी कि उसने कहा कि जो नेक आदमी है वो सुकून में है और जो गलत आदमी है वो परेशान में। एट देन तो सुलेमान ने जब सुना ना, तो सुलेमान गुस्से में आया, उसने कहा कि एंड वेयर इज अल्लाह मर्सी, उसने कहा अल्लाह की मर्सी कहाँ है? तो अबू हाजिम ने कहा कोटेड द वर्स, अल्लाह मर्सी इज वेरी नियर द राइचियस, अल्लाह मर्सी नेक लोगों के लिए, धोखेबाजों के लिए थोड़ी है, ठीक है ना। तो और फिर वो कन्वर्सेशन पूरी प्रोसीड हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब तुम किसी इंसान को ना गलत काम बताओगे कि यार उसने गलत काम किया, मैंने तुमसे कहा था बताना, उसके अंडर में ये इतनी बड़ी कंपनी का कॉम्प्रोमाइज है, वो अभी तक बैठा हुआ था। उसके ना उसको अपनी असलियत नजर आई, उसने कहा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना, लो में निकल गया फैसल भाई। ठीक है। तो वो गंदा हो गया ना, तो जब वो गंदा हो गया तो उसको हाँ, तो बस इसलिए वो काफी पुश बैक कर रहे हैं। उसने बोला आई डोंट नो व्हाई दे आर पुशिंग बैक सो मच। वो बोल नहीं रहा क्योंकि तुम जब जाओगे, अगर तुम उसके साथ बैठ भी गए ना, अब तुमने एक हंसी मजाक में बात की उससे, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारा कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन वो अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा। किसी को क्या बोलेगा, हाँ यार मेरी वॉच में इतने सारे कॉम्प्रोमाइज, इतना बड़ा मेजर कॉम्प्रोमाइज हो गया था, इतने सारे, उसको तो असूलन बैठना ही नहीं चाहिए। सीआईओ को भी बाहर जाना चाहिए, इसको भी बाहर जाना चाहिए। अच्छा, उससे मैंने वो IC 62443 का भी क्वेश्चन पूछा ना, तो उसका भी उसको आंसर नहीं आया उसके फौरन बाद ही। तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा अजब अलग तो इंप्रेशन पड़ा। डोंट गेट सरप्राइज, यहाँ लोग ऐसे हैं कि जो ना, मैं अब एक मुफ्ती रिदवान हमारे साथ काम करते हैं, इज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के शागिर्द हैं, इज मुफ्ती। मैं उनके साथ बैठ के इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा यार देखो, उसने मुझे ना, मैंने उसको एक तस्वीर दिखाई ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर थी, अगर मुझे नजर आ गई तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार देखो ये तस्वीर है, ठीक है ना, कि इंसान मतलब कि क्या वो करता है ना, ठीक है। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की मुझसे, उसकी मुझे बात अच्छी लगी, बात वो सही करता है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें हंसी भी आएगी देखकर, ठीक है। तो मैंने कहा यार देखो, ये देखो, अनाज के दुश्मन और अमेरिका के दुश्मन, के दुश्मन देखो क्या खा रहा है, ठीक है ना, और अनाज के दुश्मन का दस्तरखान देखो यार, ओहो, ये इफ्तार चल रही है, कुछ पार्टी हो रही है, देखो मतलब कि बेहतरीन जबरदस्त। और ये मेरे ख्याल से वो है चरगे शरगे क्या है, ये जो भी है ना, ठीक है। हाँ, वो ये इतने बुरे हालात हैं मुसलमानों के कि इनको ये दस्तरखान सजाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। तो जब आप खाने पे बैठो ना, तो आप 10 दफा सोचते हो यार मैं खा रहा हूँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खा रहा हूँ, अल्लाह ताला क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, बट वी आर नॉट लिसनिंग ना, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने, तो मैंने उसको भेजा, तो उसने कहा यार ये इफ्तार में हो रहा है। मैंने कहा लेकिन इफ्तार तुम देखो तो सही, मुझे पता है इफ्तार है, लेकिन तुम देखो कितना खाना है। यार मैं किसी के इफ्तार करूँ, मैं नहीं लगाऊं खाना यार। जब मैं यंग था ना, तो मैं लंदन में जब काम करता था, तो सिंगल था, तो हम लोग मस्जिद में जाके ना इफ्तार खोलते थे। तो मैं अक्सर, मुझे शर्मिंदगी होती थी मस्जिद में इफ्तार खोलने से, पता है क्यों? क्यों क्यों? भाई? मैं कहता था कि यार मैं घर में भी खजूर और वो खोल के इफ्तार कर सकता हूँ ना, ठीक है। जी।
यहाँ पर कोई मेरी जगह कोई और बैठ सकता है जी जिसको जी बिल्कुल है ना, मुझे तो जरूरत इतनी नहीं है ना, मैं पानी पी लूंगा, खजूर खा लूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक से अफ्तार की खोली, पानी से खोली, खजूर से खोली, राइट? सही है। तो मैंने कहा यार मैं उससे कर लूंगा, तो फिर मैंने जाना छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार ये जगह मेरी सही नहीं है। इट्स नॉट एज इफ कि बैठना नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल बैठना चाहिए। मैंने जी 2-3 दफा खोलता था, मैं हफ्ते में 1 दफा 2 दफा खोलता था मैं, लेकिन मैं कहता था यार मेरी जगह कोई और बैठे ज्यादा बेहतर। जरूरतमंद है सही है हाँ जरूरतमंद, क्योंकि जब जगह भर जाती थी ना वो बंद कर देते। सही है सही है। अच्छा ये आपने जो मुझे पिक्चर दिखाई ना, तो ये जब पाकिस्तान, आपको पता है वो एक जमा होते हैं फिर वो चांद वांद देखते हैं ना, कमेटी है उनकी एक पाकिस्तान में। तो वहां पे पता चला कि वहां पे आने से पहले उन्होंने बुक करा था 120 लोगों के लिए खाना पीना ये वो, खाली चांद देखने के लिए। अच्छा वो अगर चांद नहीं दिखा तो वो खाना पीना तो होगा, फिर सेकेंड डे फिर वही खाना पीना होगा 120 लोगों का। भाई देखो देखो, मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या सच्चाई है, क्या है क्या नहीं। देखो मैं बहुत क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ स्कॉलर्स को। देखो नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, ये सब लोग जो है ना, इनसे ये एक्सपेक्टेशन, इमरान खान इनसे लीस्ट करप्ट है, मगर उसका जी भी कोई तरीका वो नहीं है, साहबा वाला तरीका नहीं है, बस वो एक लीस्ट करप्ट है। लीस्ट करप्ट है सो कॉल्ड अभी तक, ठीक है ना। लेकिन ही इज नॉट फॉलोइंग द ब्लूप्रिंट ऑफ द साहबा, ही सेज इट बट ही इज डूइंग अदरवाइज, ठीक है ना। मगर ये जो जरदारी और वो हैं, हमारे अमाल जब बहुत बुरे होते हैं अल्लाह ताला हमें इन पे मुसल्लत कर देता है। जब जी हमारे अमाल थोड़े से बेहतर होते हैं अल्लाह ताला हमें दे देता है। अगर हमारे अमाल बहुत अच्छे होंगे अल्लाह ताला हमें कोई और नेक बंदा दे देगा। इंशाल्लाह। सही है। तो अभी हम वहां पर नहीं है, बट द पॉइंट इज के देखो ये जो सारी जो ना हमारे जो स्कॉलर्स है ना, अल्लाह ताला इज टेकिंग द, अबू हाजिम कह रहे हैं अल्लाह इज टेकिंग द प्लेज फ्रॉम द स्कॉलर्स टू स्पीक द ट्रूथ। So you have to speak the truth. When you're working in the organization, you have to speak the truth. Don't sugarcoat anything, don't hide anything, just put it out there. बिल्कुल And when you put it out there, people will not like it. ठीक है ना, उन लोगों को बुरा लगेगा, because they know they haven't done any preparation to address that thing. And that's why they will hate you. ठीक है ना. So when you go in cyber security or risk or DevOps or SysOps or AI, whatever, right? You have to, in all of these emerging technologies, always safeguard yourself and speak the truth. Don't hide anything. Say, this is the problem. How should we address this problem? ठीक है ना. तो let everyone think. Just don't put anything under the rug. Under the rug मत डालो. लेकिन तुमने सही किया, मगर उसको बात बुरी लग गई। लेकिन उसने देखो तुम्हें किसी को मना भी नहीं किया कि यार नहीं इसका CV नहीं आने दो। हाँ ये अब पता नहीं। हाँ ये बात तो ठीक है, इसने आने दिया फिर भी। उसे कह यार आने ब्लैकलिस्ट दो की यार, तरह। उसने कहा मैं इससे बात नहीं करता लेकिन आने दो, क्योंकि वो अब वो किसी को क्या मना करेगा, वो क्यों, तुम उसको बोलेगा इसको ना डोंट हायर दिस पर्सन, बोलेगा क्यों, ही हैज एवरीथिंग इन हिज रिज्यूमे, बोलेगा हाँ यार ये बात तो सही है। उसने कहा यार उसने तुमसे ज्यादा सवाल किए थे, तुम्हें भी नहीं पता, तुम उसकी पोजीशन पे बैठे हुए हो, तुम उससे ऊपर बैठे हुए हो, तुम्हें नहीं पता 62443 क्या है, जबकि तुम्हें पूरे पावर प्लांट में इंप्लीमेंट करना चाहिए था। जी ठीक है ना. तो वो पश्तो में कहते हैं ना गोल करके द गोल उसुटे, यानी कि कहते हैं कि टट्टियों का ढेर। ठीक है. मेरी माँ जो है ना, मेरी माँ ये बड़े जबरदस्त किस्म के मुहावरे इस्तेमाल करती है, ठीक है ना, पश्तो में ना. तो जी वो जो है ना बस जो है ना बड़ी मतलब क्या ना कहती है कि बड़ी जब ना कोई इसको बात लगती है ना कहती है कि अजीब, ठीक है ना. तो इस तरह के मैं तुम्हें एक मुहावरे तर्जुमा करके बताता हूँ कि जब तक गंजी की शादी नहीं होगी उसको यकीन नहीं आएगा कि शादी हो गई उसकी, ठीक है ना. तो इस तरह की वो बड़ा मुझे हंसाती है, ठीक है ना. तो अच्छा मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे मेरे साथ नमाज के लिए उठती है, तहज्जुद के लिए उठती है, मुझे दीन पे लगाने वाली उसमें उसका हाथ है, ठीक है. जी तो मुझे बेचती थी, पकड़ के मस्जिद बेचती थी जब मैं छोटा सा था. तो है वो मतलब गांव की औरत है, लेकिन हमारी जो सरहद की औरतें हैं ना बड़ी वो होती है माशाल्लाह, राइट. तो एनीवे द पॉइंट इज के ना always speak the truth and Allah will give you success. So DRW को लग रही है, on surface it looks good, they are paying you very well. Let's do some research, let's dig in deeper, apply for it, see it if you can, ठीक है ना. If you can secure the job, go in, work over there. तुम्हारे पास क्लियरेंस भी है, सब कुछ है. यूटिलाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मे अल्लाह हेल्प यू इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। फैसल भाई आप फिर मुझे सेंड करिएगा तो मैं उनको सेंड कर दूंगा। मैं करता हूँ अभी, ठीक है ना, इंशाल्लाह. कुछ सवाल ले लूँ फिर मैं करता हूँ, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद ऑन साहब बोलिए, बिस्मिल्लाह बोलिए. अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह. जी अ, बोलिए. फैसल भाई मैंने बस यही पूछना था कि अल-नाफ़े का जो बैचलर डिप्लोमा है वो मुझे हेल्प कर सकता है अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में जॉब सिक्योर करनी हो, क्योंकि वहाँ का वर्क वीज़ा लेने के लिए आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो
वॉशिंगटन अकॉर्ड से या सिडनी अकॉर्ड से एक्सेप्टेड होनी चाहिए। तो मेरा यही कंसर्न था इस बारे में। देखो, उसके लिए तुम्हें जो है ना उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और मालूम करना पड़ेगा। आरक्यूएफ जो फ्रेमवर्क है जी वो जी तमाम जगहों पे माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर तुम उसको करके जाते हो तो ऑस्ट्रेलियन तो वो मानते हैं उसको, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका जो है ना AQF होता है, ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये सवाल तुम्हें ऑस्ट्रेलिया की उनसे पूछना चाहिए। देखो, ये ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क उनकी वेबसाइट है, द टर्शियरी एजुकेशन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एजेंसी। तुम उसको ये सवाल तुम उससे पूछो, बिकॉज ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे फॉलो द सेम थिंग्स ना, ठीक है। जी तुम यहाँ से पूछो कि भाई इसका इक्वलेंसी क्या है, कि जिन्होंने जो इक्वलेंसी निकाली हुई है ना, तो ग्रेजुएट डिप्लोमा इसके ऊपर है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो तुमसे पूछो कि भाई अगर मैं, देखो ये डिप्लोमा है, ये एडवांस डिप्लोमा है, ये एसोसिएट डिग्री है, ये बैचलर्स डिग्री है, ये बैचलर्स ऑनर्स डिग्री है, ठीक है ना। तो तुम इनसे पूछो कि भाई अगर मैं ये करके आता हूँ RQF वाला, ठीक है ना, तो मुझे इसमें कहाँ इक्वलेंसी मिलेगी, दे विल बी एबल टू टेल यू। बट हम तुम्हारा काम आसान करने के लिए हम ऑलरेडी यूके यूनिवर्सिटी से बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास ना कुछ यूनिवर्सिटीज आई भी हैं जो हमारे साथ इसमें काम करने के लिए तैयार है। और इसी तरीके से हम लोग ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इन सबसे हमने बातचीत ऑस्ट्रेलियन से शुरू करनी है, बाकी तमाम से शुरू करनी है। तो हम लोग इस मंथ से, मई से शुरू कर देंगे। तो हम ऑलरेडी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये RQF है, तुम लोग इस AQF को मानते हो, लेट्स, और ये दोनों एक दूसरे को इक्वलेंट मानते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में AQF चलता है, यूके में RQF और SCQF और SQF और वो जो भी है वो चलता है। ये चार है उनके पास, चार है उनके पास, हर टेरिटरी का अलग अलग है। यूरोपियन का EQF है, यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ऑल ऑफ देम दे कोइंसाइड लाइक दिस, उन सब की मैपिंग है, ठीक है। जी तो वो सब चीजें उनकी मैपिंग, उनकी वो मानी हुई है, तो तुम्हें उसकी असेसमेंट करवानी है। दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू, दिस नथिंग एल्स। क्यों नहीं मानेंगे, ठीक तो मानेंगे, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि भाई ये मेरे पास है और इसको क्या मानते हैं कि नहीं मानते। क्योंकि यूके के अंदर यूके गवर्नमेंट को और तमाम यूनिवर्सिटीज को, ठीक है ना, वो RQF चलता है, ठीक है ना। जी जी उनका RQF है, दैट्स अ नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो उनका ऑफ कॉल जो है ना उसको चलाता है। ये 1987 से बना हुआ है, नेशनल वोकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है ना, NVQ जिसे कहा जाता है। और RQF जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है ना, सब चीजों को, तमाम डिग्री प्रोग्राम्स को, सबको। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो RQF की इक्विवेलेंट है, ठीक है। ठीक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री मानते हैं ऑस्ट्रेलिया में? हाँ वो भी मानते होंगे 100%। फिर अब वो RQF है, ये भी RQF है, बस खत्म हो गई बात। दैट्स हाउ जी ये, ठीक है। दैट्स तो, बहुत वेयर आर यू राइट नाउ, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं तो पाकिस्तान में हूँ। असल में हाँ, मेरी फैमिली जो मुझे है वो एक केस पता ऑस्ट्रेलिया है, में। मेरे पास ना एक मेजर साहब का बच्चा आया था। ठीक उसने कहा कि ना ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन में अप्लाई कर रहा हूँ और उसके अंदर ना मुझे RQF इक्वलेंसी मुझे नजर आई है, उसने मुझे भिजवाई भी थी। मैं देख के तुम्हें बताता हूँ अभी, ठीक है। उसका नाम क्या है, मुझे अगर अभी नजर आ जाए। अ, सालार नाम है इस लड़के का। इनका कोई नेशनल वीजा प्रोग्राम शुरू हुआ है, ठीक है, जिसमें वो लोग ना आपका एक ऑथराइज डिप्लोमा मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो इसने मुझे इसमें कहा था कि भाई आप मुझे प्लीज बताइए कि क्या मुझे वो चीज़ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है ना, कि आप मुझे अपना एग्जाम, मैंने कहा भाई एग्जाम तुम्हें देना पड़ेगा, एग्जाम पास कर लोगे तो मिल जाएगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। सो वो चीज़ हम लोग जून से शुरू कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें इंशाल्लाह। मजीद करके बता दूंगा, हाँ मैं तुम्हें मजीद इसमें निकाल के तुम्हें बता दूंगा। बट RQF इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर, ठीक है ना। ठीक है फैसल भाई, थैंक यू। देखिए बहुत तुम्हें शुक्रिया। जाके जो है ना RQF लेवल 5 कर रहे हो या लेवल 6 कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो ना, इट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। आई मीन, नहीं अभी मैं अभी तक तो मैंने कोई एनरोल नहीं किया। इंशाल्लाह मैं अभी कैट डिप्लोमा साइबर सिक्योरिटी देखो इंशाल्लाह ये एनरोल होने मैं तुम्हें वाला हूँ। दिखाता हूँ, ये इनकी यूके नैरेक की वेबसाइट है जो कि तमाम क्वालिफिकेशंस को करती है। कैम्ब्रिज प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्वालिफिकेशंस, यूके नैरेक बेंचमार्किंग रिपोर्ट। ये यूके है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अफ्रीका है। यूके में RQF है
और FHEQ है, ऑस्ट्रेलिया में AQF है, ठीक है ना, और इस तरह से। और यहाँ इन्होंने पूरा दिखाया हुआ है, पूरा बताया हुआ है कि आप कैसे क्या करते हैं। और अगर तुम लेवल 5 का डिप्लोमा करते हो तो दैट्स AQF में 6 पे आएगा, एडवांस डिप्लोमा एसोसिएट डिग्री, क्योंकि ये बैचलर्स के 1 साल के बराबर होता है ना, बैचलर्स के 2 साल के बराबर होता है। लेवल 6 करते हो तो ये बैचलर्स के बराबर होता है, यहाँ पर भी बैचलर्स के बराबर है, देख रहे हो, ठीक हो गया, जबरदस्त। सही है ना। अगर लेवल 7 करते हो, ये हमारे मास्टर्स के बराबर है, तो यह भी मास्टर्स के बराबर है, लेकिन इसका नाम लेवल 9 इन्होंने किया हुआ अपना AQF का। तो ऊपर नीचे चेंजेस हैं, ये तो मैं इनकी पूरी इनकी वेबसाइट में मिल जाएगी, कैम्ब्रिज इसके ऊपर, यूके नैरिक के ऊपर मिल जाएगी। यूके नैरिक उनकी बॉडी है जो बाहर की जी। क्वालिफिकेशंस की असेसमेंट करती है, तो यू कैन सी कि ये सारी चीजें उनकी पहले ही मानी जाती, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह Very- फैसल भाई। ये इंटरनेशनल चीज है, ये कोई मजाक नहीं है। सो इट्स एक्सेप्टेड। अभी हमने लेवल 3 और 4 लिए है ना, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन 5, 6 एंड 7, वो आने वाले हैं हमारे पास इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है यूके की, और मैंने 60% तो फीस कलेक्ट कर ली है। तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में इंस्टॉलमेंट वगैरह का ऑप्शन है कि हम इंस्टॉलमेंट वगैरह देकर पढ़ लें, हमें फुल फीस करनी पड़ेगी? देखो, तुम जितनी फीस जमा कराओगे, अगर तुमने 1 साल की फीस जमा करानी होती है, अगर तुम जितनी फीस, अगर तुम बैचलर्स 3 साल का करने आ रहे हो तो तुम्हें 3 साल की नहीं, बैचलर्स मास्टर्स। मास्टर्स करना है। तुम जितनी फीस जमा कराओगे, तुम्हारा इतनी प्रोबेबिलिटी होती है पहले साल की कि तुम्हारा वीजा कितना अच्छा लगेगा। अगर तुमने 50% करा दी, ठीक है, 60%, 100% करा दी, वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चांस तुमने खुद अपने हिसाब से लेना है कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम फीस ज्यादा पे कर दोगे, फीस पूरी पे कर दी, बैंक स्टेटमेंट तुम्हें कम दिखानी। अगर तुमने फीस कम की, बैंक स्टेटमेंट ज्यादा दिखानी। दैट्स हाउ इट गोज। अब ये तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हें क्या करना है। दैट इज तो मतलब ऑप्शन होगा वहाँ पर? हमारे पास ऑप्शन होगा, तुम्हें कम से कम 50% फीस पे करोगे, ठीक है, तो तुम्हें लेटर मिल जाएगा। दैट्स व्हाट वी हैव, ठीक है ना, दैट्स द मिनिमम थ्रेशोल्ड, बिकॉज़ यू हैव टू सबमिट द फी। 60% तो मैंने कलेक्ट कर लिया, अभी बाकी 50% तुम 50% कर दो, अपना लेटर ले लो, बाकी तुम बैंक स्टेटमेंट दिखा देना, जो भी तुम्हें करना है, व्हाटएवर यू तो वांट। ये यूनिवर्सिटी ओपन कब होगी? अभी फाइनल एडमिशन वगैरह कब स्टार्ट होंगे? जैसे हमारा हो जाएगा हम तुमको बता देंगे, जस्ट वेट। मैं अब कोई चीज की अनाउंसमेंट नहीं करता, जब मेरे हाथ में आती है बोलते हैं ये लो, ठीक है। अच्छा सर, अगर मतलब सितंबर में आपकी नहीं हुई तो नेक्स्ट अगर चाहती है तो कोई और यूनिवर्सिटी में मैं ले लूं तुम्हें जहां यूके की? लेना तुम ले लो, तुम टाइम क्यों जाया कर रहे हो, मैं सबको यही बोलता हूँ। मतलब आप कोई बता दें जो जिसकी फीस कम हो यूके की। ये तुम खुद जाके मालूम करो, मैं मेरे पास टाइम थोड़ी कि मैं तुम्हारे हिस्से का काम करूँ। यू हैव टू डू इट ऑन योरसेल्फ, ठीक है। सही है। जी ठीक है, तो ये काम तुमने खुद करना है, ये काम मेरा नहीं है भाई। नहीं सर, मैंने काफी रिसर्च करा तो कोई ऐसी मिली नहीं जो 12,000 पाउंड फीस है जिसकी। देखो 12,000 पाउंड बहुत कम है। तुम्हें हो सकता है 13 मिल जाए, 14 मिल जाए, 15 मिल जाए, 17, 18, 20 तो मिल ही जाते हैं बड़े आराम से। तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम यूनिवर्सिटीज के नाम निकालो, मालूम करो, और तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। 12,000 हम जो दे रहे हैं ना, उसमें बड़ी हाई क्वालिटी है। मैं मेरे पास इस वक्त जो है ना, इतने रेज्यूमेज आए हुए हैं। जो हमने अभी प्रोग्राम शुरू किया है, हम स्टूडेंट्स को बड़ी बड़ी कंपनीज में कनेक्ट करवा रहे हैं, राइट। तो उसमें मेरे पास बहुत रेज्यूमेज आए। तो मैं अभी अगर तुम्हें रेज्यूमेज बताऊं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के, तो वो जो बच्चे आए हुए बैठे हुए हैं, उन्होंने 20-20 हजार, 22-22 हजार की डिग्री की हुई है, वर्क परमिट हाथ में आ गया, जॉब्स नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कोई स्किल ही नहीं। हमारे पास तो बच्चा अभी डिग्री खत्म ही नहीं हुई है, क्या जॉब। बता रहे हैं सर, मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने डिग्री भी कंप्लीट कर ली है और ये भी कर लिया, मैं करूँ क्या? भाई तुमने बैचलर्स कहाँ से किया पाकिस्तान में? मैंने आपको बताया था, मेरी जनवरी में आपसे बात हुई थी, मैंने आपको बताया था ये मैंने एक यूनिवर्सिटी से करा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। बस तुम जाओ पहले, अभी अपना कुछ ट्रैक अच्छी तरह पर डेवऑप्स सिसऑप्स पढ़ो, अपने आपको तैयार करो किसी भी यूनिवर्सिटी मैं में। डेव पढ़ रहा हूँ, डेव तो मैं पढ़ रहा हूँ। देखो तुम्हारे ट्रैक पास मैंने कहाँ का ऑप्शन है, तुम्हारे पास ना यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड है, वेस्टमिनिस्टर है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, ब्रुनेल है तुम्हारे पास। बॉटम 10 से तुम देखो, सबसे नीचे ना, वहां तुम्हें सस्ती फीस मिलेगी, वहां से देखो। मतलब एडमिशन होता है तो मैं ले लूँ, आपका वेट नहीं करूँ फिर? तुम मुझसे अगर निकलवाना चाह रहे हो कि मेरे कब मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है, सही है।
मुझे मना किया गया है, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। सो यू हैव टू वेट। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इफ यू वांट टू गो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। भाई जहां जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हें मना थोड़ी कर रहा हूँ। गो। सर लेकिन वो क्वालिटी की बात आ गई ना, मैं फिर घूमता ही रहूंगा जैसे बाकी स्टूडेंट घूम रहे हैं, बता रहे होते हैं। देखो अल्टीमेटली ये देखो, डिग्री करने से तुम्हें सिर्फ PSW मिलता है। फर्क इतना है कि हमारी डिग्री के अंदर सारे एम्बेडेड हैं। तो तभी तो मैं वही चाह रहा हूँ। दिस इज द बिगेस्ट वो। हमारा जो मास्टर्स है उसमें 5 डिग्री, हमारी मास्टर्स का नाम है मास्टर MSc इन स्मार्ट ऑप्स। स्मार्ट ऑप्स का क्या मतलब है? उसमें डेवऑप्स है, उसमें सिसऑप्स है, उसमें क्या नाम है, बिग डेटा है, उसमें AI है, और उसमें डेवसेकऑप्स है। ये 5 चीजें मिलाओगे इसको बनते हैं स्मार्ट ऑप्स। हमारे स्मार्ट ऑप्स के अंदर डिग्री, तुमने स्मार्ट ऑप्स का नाम ही नहीं सुना। स्मार्ट ऑप्स क्या चीज है? सारे आपने बताया था, सुना था मैंने। आज दिखाया था ना मैंने। दैट इज ए न्यू डिग्री। अभी हार्वर्ड और MIT सब सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हमने तो बना भी लिया भाई, कि हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, हमें पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है। सो AI ऑप्स है, मशीन लर्निंग ऑप्स है। दिस इज AI ऑप्स जो है, इसके अंदर डेवसेक ऑप्स और AI मिला के AI ऑप्स बन गया। इट्स ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। वो हमारा बैचलर्स है लेवल 6 का। तो हमारी चीजें बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मिलाकर अलग ट्रैक्स हमने बनाए। यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट। when it comes I will say here you go। देखो जब एजुकॉल आके बता दिया ना, ये लो यार, ठीक है, बस तो तुम वेट करो यार। वी आर वर्किंग डे एंड नाइट। मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि अगर तुमने स्टडी कर लिया, अगर तुम्हें हमारे मास्टर्स में जाना है, तुम सिसऑप्स और ना AI को मिला के पढ़ो अभी से। मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि अगर तुमने पढ़ लिया, अगर तुम हमारे पास नहीं भी आए, तुमने कहीं और एडमिशन, हमारे पास एडमिशन ले लिया, तो तुम्हारे 7 कोर्सेज में 3 कोर्सेज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तुमने 3 पढ़ लिया ना, वो 3 खत्म हो जाएंगे। तो तुमने सिर्फ कितने करने होंगे? 4 करने होंगे। सर ठीक है, दैट्स इट। तुम्हारी फीस कम हो जाएगी। तुम यहाँ पर फीस रुपए में दोगे, वहां तुम्हारी पाउंडों में फीस कम हो जाएगी। दैट्स अ डिफरेंस। फर्क पड़ेगा तुम्हारे पास, यानी कि 12,000 पाउंड है ना, तो पर उसका क्या पड़ रहा है इसका, यानी कि पर यूनिट जो है डिवाइडेड बाय 7, तो 17 14 ना, तो 3 को तो मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं 5,000 पाउंड की बचत हो जाएगी, 5,200 पाउंड की बचत हो जाएगी रफली। तो 5,200 पाउंड पाकिस्तानी कितने होते हैं अभी? ब्रिटिश पाउंड कितने का हो रहा है? 300, 350 का। 350 का? उफ, अच्छा। तभी तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि करें क्या, ये हाँ, तो तो उसको बढ़ता चला जाएगा। 350 से करते हो तो 18,20,000, 18,20,000 का तो ट्रैक नहीं है। मैं तुमको इतना बता दूं, ठीक है ना। सही है, दैट्स अ डिफरेंस। सो अब तुम्हारी अपनी मर्जी की तुम्हें क्या करना। तभी वो ट्रैक बताते हैं सर, वो जो आपने अभी बताया, कौन सा लूँ, फिर मैं ले लेता हूँ। डेवऑप्स, सिसऑप्स, AI मिला के पढ़ो, ठीक है ना। अगर तुम ये हमारे पास पढ़ते हो, तुम्हें वहां जाकर जॉब मिल जाएगी। हमारे पास पढ़ के वहां जाते हो, हमारी यूनिवर्सिटी में तुम्हें इतनी एग्जामेशन मिल जाएगी। ठीक है, 1 मिनट मुझे देना, यूसुफ बैठो जरा, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है अली, मैंने जिस आपको बताया कि आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। डेवऑप्स, सिसऑप्स, AI मिला के अगर आप, इसका पूरा मिला हुआ ट्रैक है, वो लेके पढ़ना शुरू कर दो, यू विल बी प्रिपेयर्ड। जी शाकिर शाफी साहब बोलिए। शाकिर शाफी साहब बोलिए, क्या अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर, हमारी बात हुई थी कुछ दिनों पहले, अगर आपको याद होगा तो। कभी कभी भूल भी जाता हूँ मैं, याद कराएं कि क्या बात है। जी जी, कश्मीरी कश्मीरी स्टूडेंट जो था। कश्मीर से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, आपको क्या मसला है? आपको पढ़ाई करनी है, क्या करना है? जी, जिसने वो 2020 में जो 12th कर रखी थी, और वही आपको याद आ। सॉरी, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। जी, जो इंटरमीडिएट जो मैंने किया था 2020 में। मैं आपको बता चुका हूँ आपको क्या करना है, मैंने आपको, मुझे याद जी, है। वही सवाल मेरा है कि मैं किसी आपका जो डिप्लोमा लेने जा रहा हूँ। मेरा सवाल है कि डिग्री कुछ मैं साथ साथ कर लूँ या इसी में फुल टाइम में लगा लूँ? इसको करने यही से मेरा डाउट।
मकसद तुम्हारा, अगर तुम्हारा मकसद इंडिया में ही रहना है तो तुम फिर इंडिया में रहो, उसके साथ से तुम अगर डिग्री करते हो डिग्री कर लो। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें उसकी इक्वलेंसी के ऊपर वैसे ही एग्जाम्शन मिल जाएगी, तुम बाहर जा सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारा मकसद क्या है ना काम करने का। बैठ के वहीं काम करना है, क्या करना है, दिस ऑल कम्स डाउन टू योर ओन डिसीजन, नॉट मी। ये तुम्हारा डिसीजन तुम्हें खुद लेना है कि तुम्हारा क्या डिसीजन। जी अयान मतीन साहब बोलिए। मैं यहाँ पर थोड़ी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। हाँ जी सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी सर, मैंने कैट कर रखा है, अल्नाफी से कैट कर रहा हूँ, अभी तो ख़त्म होने वाला है जुलाई में। तो मैं साइड बाय साइड वो डेवऑप्स में वो कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। जी फिर मुझे थोड़ा आपसे कुछ वो पूछना था, क्यूबरनेटिस का क्या कहते हैं, सर्टिफिकेशन करना सही है कि नहीं है? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ आपको। और डेवऑप्स का हमारा पूरा ट्रैक है जिसमें पूरी तैयारी करवाई है, सब कुछ करवाया। आप जाके उसको फॉलो करें, आपकी सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी, आपको सब चीजें पता चल जाएंगी। यू विल बी एबल टू बी वे वे अहेड ऑफ द कर्व। आपको सब बता चुका हूँ इसका। आप उसको जी जाके जरा देख लें, फॉलो कर लें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। जी समीर खान साहब बोलिए। अस्सलाम सर। सलाम सर। एक से पहले सर आपको बताया था जॉब हो गई थी मेरी लाहौर में ना, डेवऑप्स स्टूडेंट। हाँ हाँ समीर खान, हाँ हाँ, क्या हुआ तुम्हारा लेटर में नहीं मिला अभी तक तुम्हें एचआर से? नहीं सर, लेटर नहीं मिला सर। आपको एक बात बतानी है सर, उस टाइम मेरे पास दो ऑप्शंस थे, ठीक है, और एक ऑप्शन मैंने मतलब तर्क कर दिया, मैंने कहा कि नहीं जाना मैंने उसके साथ। और एक का आज ऑफर लेटर आ गया है और उन्होंने बुला लिया मुझे मंडे को ना, और पे वगैरह चीजें वगैरह दे दी सर। उस दौरान अभी तक सर बैंक का लास्ट भी कॉल आई, उन्होंने लिंक्डइन से लिया था और वो कराची में थे, तो वो खाया करना, लेकिन सर वो बैंक की जॉब थी, मैं नहीं जाना चाह रहा था बैंक में ना, वो इस पहली वजह से। तुम्हें वाली जॉब में कितने पैसे मिल रहे हैं? सर एक पुराना 1 लाख। ये पूरा मिला, अच्छी बात है, ठीक है। सर एक और बात सर, तो फीस कुछ महीनों में पूरी यूनिवर्सिटी की निकल जाएगी। सर वो फेस सिस्टम लिमिटेड में भी सर मेरा इंटरव्यू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सर वो भी क्लियर हो गया। और सर वो भी इस हफ्ते इंशाल्लाह बुला लेंगे ना, इस हफ्ते के एंड में या अगले मंथ ना, हाँ, उनसे आज बात की। बैंक में मत जाओ, बैंक को नहीं छोड़ो। नहीं सर, सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड में मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, काफी सारे। जी ठीक है, सर। तो सिस्टम लिमिटेड के अंदर हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। हमें वहां पर हमाद नजर आएगा, बहुत सारे, कितने सारे भरे हुए लड़के तो जी काम सर। कर रहे हैं। अच्छी बात है, सिस्टम लिमिटेड पैसे कम देती है। सर पैसे वाकई सर, मैं तो एक ही बोला उन्हें और वो उम्मीद है कि सर वो एक कर देंगे। अगर सिस्टम लिमिटेड एक करते हैं तो ठीक है, सही है। अदरवाइज बोलो नहीं यार, मतलब कि पैसे आप कम दे रहे हैं ना, काम आप अच्छा खासा मांग रहे हैं और पैसे कम दे रहे हैं, तो नहीं, मजा सर नहीं। वैसे सर ये जितने बाहर के आपके स्टूडेंट्स बैठे हुए ना, ये जो आप इनको चीजें करवा रहे हैं ना, हालांकि मैंने सर ये सारी चीजें पढ़ी नहीं है, बस एक चीज ये है कि मैं पाकिस्तान में हूँ बस। बाकी सर जिस तरह इन्होंने कैट पढ़ा और ये डेवऑप्स इन्होंने पढ़ा, सब मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, मुझे हर चीज इसके पता है। मैं यही है ना कि मैं भी अब कोशिश कर रहा हूँ। मेरी सर बाहर निकलो, जब तुम बाहर निकलोगे दैट विल ओपन द डोर्स फॉर यू ऑटोमेटिकली एंड यू विल बी एबल टू प्रोसीड इंशाल्लाह एंड बी सक्सेसफुल। मैं बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। जी कफील फयाज साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? लेटर सर वो फिर मुझे लेटर मिल आ जाए। जाएगा समीर खान, मैं लिख लेता हूँ, मैं अभी उनसे मैसेज पे बात भी करता हूँ, ठीक है। मुझे मैसेज करके याद भी दिला। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी कफील साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर इंटरव्यू की कॉल आई है पीटीसीएल से, आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए थी कि किन चीज़ों की तैयारी कर लूँ। इंटरव्यू की कॉल किस चीज़ की आई है आपको? आप यहाँ से क्या पढ़ा है? जी सर, यहाँ से क्या पढ़ा है? यहाँ से केट पढ़ रहा हूँ। और आपकी पोजीशन क्या है वहाँ पर? अभी एग्जीक्यूटिव फिक्स नेटवर्क ऑडिट की पोस्ट है। वही जो काम मैंने रिस्क एनालिस्ट का बताया, वही काम नेटवर्क ऑडिट, उसके अंदर एक छोटा सा काम है जो वो करता है। आपने बिल्कुल उसको लेके पकड़ के जो शुरू में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई ना सारी इंग्लिश में, वो इंग्लिश में थी, ठीक है। जी सर। आपको उसको मेहनत करके जाना है कि नेटवर्क ऑडिट अगर होगा तो आप क्या करेंगे, आप नेटवर्क की असेसमेंट करेंगे, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स करेंगे, पीटीसीएल की जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से जो है ना मतलब कि बोलोगे कि भाई मैं उसका ऑडिट करूंगा। क्या वो आईएसओ को फॉलो करते हैं 27001 को? क्या वो पीसीआई मतलब कि पीसीआईडीएसएस को तो फॉलो नहीं करते, उनका तो कुछ और है पीसीआईडीएसएस। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी क्या हैं, आपके नेटवर्क्स के कहाँ हैं। अगर आप उसके वायर लाइन और वायरलेस के ऑडिट्स करवाते हैं वो अलग है, ठीक है ना। तो वायर लाइन के जो ऑडिट्स हैं उनके फिजिकल सिक्योरिटी ऑडिट्स अलग होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिट्स अलग होते हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स यू हैव टू मेंशन, ठीक है।
तो वो सब चीजें तुमने बतानी है, and if you mention these जी things, जी this is going to be an easy walk in the park inshallah for you. ठीक है, तो वो जी जो जी सारी चीजें मैंने बताई हैं कि किस तरह से कॉन्टेक्स्ट होगा, क्या होगा, अगर मेरे पास जॉब डिस्क्रिप्शन सामने नहीं है, मैं तुम्हें इस तरह तो नहीं बता सकता ना हवा में कि यार ये लो इस तरह से होगा. सो यू हैव टू शो मी द जॉब डिस्क्रिप्शन, तो मैं फिर तुमको बता सकता हूँ कि तुमसे क्या सवाल होंगे. ठीक है, जी डॉ तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना, तुम्हारा जो लाइफ डिस्क्रिप्शन है, वो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में बताया. तुमने तैयारी की उसकी? जी जी उसकी तैयारी करो भाई, उसकी तैयारी जी करो. जी अभी अगर आंखें बंद हो गई तो मन रब्बुकुम मन दीनुकुम मन रसूलुकुम सवाल शुरू हो जाएंगे, फौरन सवाल शुरू हो जाएंगे. नहीं सवाल देंगे तो बहुत मार पड़ेगी. ठीक है ना? जी Prepare yourself. अभी So you need to understand the question. नेटवर्क में टेस्टिंग का जो कोर्स है ये सारा ये कर लूँ और वो रेस असेसमेंट वो सारा इंटरव्यू देख लूँ उस हिसाब से कर लूँ प्रिपरेशन. आपने कितनी चीजें खत्म कर दी हैं? कितनी चीजें आपने खत्म कर दी? मेरा तकरीबन 11th मंथ चल रहा है अभी. 11 मंथ्स तक आपने सारी चीजें खत्म कर ली, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सब चीजें खत्म कर ली आप. वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग सारा कंप्लीट किया है. WSTG भी आपने कंप्लीट बैश, किया. पाइथन, ऑटोमेशन सब चीजें की जो उसमें करवाई हैं? नहीं अभी वो नहीं की. आप इसको सबको खत्म करके जाओ ना. देखो, इंटरव्यू के लिए बुलाना बहुत आसान है, लेकिन इंटरव्यू को वो करना, क्रैक करना, वो एक अलग चैलेंज होता है. उसको तुम उसी सूरत में कर सकते हो कि जब तुम्हें पता हो कि तुम हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग प्रॉपरली. ठीक है ना? अगर तुमने वो सारी प्रिपरेशन की होगी, सब कुछ किया होगा, तो तुम बड़े आराम से कर लोगे. उस चीज को फॉलो करो. अगर तुमने ये पूरा कर जी लिया, कंप्लीट कर लिया, फिर तुम लेके जाते हो, यू विल बी इजीली एबल टू बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह. जी ये इंशाल्लाह. शकूर साहब बोलिए. बोलिए शकूर साहब. वालेकुम. फैसल भाई शकूर बात कर रहा हूँ कोयटा से जी. एक मिनट सब्र कीजिएगा, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ रही है मेरे वाले साहब की. हेलो. वालेकुम सलाम. इज दिस सिस्टर फरा? Alhamdulillah, alhamdulillah, I'm okay. So Dr. Dishan did told me about like the call. I was expecting that. Yes, go ahead, sister. Available tomorrow morning. Would that work for you? Tomorrow morning, what time? 10:45. 10:45 is perfect. I'll be there. Okay. What is the address? Like Ajax Hospital? It's a little confusing. So, right, whenever you're ready with a pen. I am ready. I have it. It's in front of me. Yes. 65. Daily, DAYLY. Okay. Daily Street West. Okay. Level 1. Okay. Level 1. 100. Suite 100. Okay. Okay. It's not the Ajax Hospital. It's outside. It's outside. Okay. When you come here, if you're using GPS, it's going to bring you to a residential building. We're attached to that residential tower. We're on the commercial side of it. Got it. Okay. Okay, so it's just misleading because when you, for the parking entrance, you cannot see the commercial side. So the underground parking is shared with the residential. It looks like when you pull up, it looks like you're going underground for the residential parking. It's the right place. Got it. Okay. So underground residential parking is shared. Okay. Right. So once you're underground, you do have to look for an elevator that actually says retail and office. There's 3 elevators. The other 2 take you to the residential. Okay. So which one is it? Left, right, middle? Which one is it? Hard to tell. When you come in, Okay. the second one is unfortunately a very difficult building with very poor signage. So when you're driving underground, you will pass an elevator, you will see it, but you just pay attention to the sign overhead that it's saying office and retail. Office and retail. Okay. Got it. Okay. Okay. I'm going to leave you my cell number. If you're lost or anything, you can directly text me. Okay. Jazakallah khair, sister. Yes. What's the number? No problem. 647 647. 564 Mm-hmm. 3940. Got it. Okay. Inshallah. Okay. And the office itself is called Durham Bone and Joint Specialist. Durham Bone and Joint Specialist. Got it. Okay. Now, here's my one request. I have not received anything from the tax, possibly because we have so many taxes and they're kind of lost in the mess. Okay. Can you just tell me a little bit about Uncle's injury and what's going on so I can put some notes on the file? So Dr. Hassan sent that at 3:45 p.m. yesterday.
from Cerebray Medical Center. So basically, the father, he had a bike injury, and that impacted his left leg, I believe. And what happened was basically we did a X-ray and MRI. The MRI detected a complete tear. Basically the bone, the femur bone is touching the other bone, right? And there's a lot of swelling. He cannot walk. It's very difficult for him to walk, right? That's what's happening right now. I mean, this is the layman version for myself, but yes. But what I'm going to do is I'm going to bring in all the reports and everything, and I have the X-rays and the everything in a CD as well. And so when I walk in, I will have all of those things. He was also diagnosed with level 3 arthritis as well, the grade 3. That's what, yes, right. But just one thing. So I know you're saying it was an old bike injury, but did something traumatic happen recently? All of a sudden, this all happened all of a sudden, right? He's a no, he didn't. So he's a very active person. Lots of gardening. Every year we do a harvest of more than 300 kg of tomatoes and stuff like that, right? Okay. So he's very active in all of those things. And all of a sudden, he has been for a few days. He was complaining about knee pain, and then on one day when he woke up, he couldn't walk, and he said his leg is stiff, etc., etc. And the next thing we knew was I took him for an X-ray. They said I took him to the ER. Right, my wife is a physician herself. She's actually the family physician of your family. Yes. So she told me no, the doctor is wrong. This is not something like that. Grade 3 arthritis doesn't activate itself. It doesn't present itself like this. You have to take him for MRI. So I booked an MRI. I went at 2 a.m. in the morning over there in Mississauga. Right, and I got it done, and they said it's a complete tear of the tendon, and the tendon is teared up, and that's why bone on bone is crushing each other. Okay. And how many days has this been? This happened around 4 weeks ago now. Yes, 4 weeks. He's in a lot of pain, so I'm thinking if he couldn't find the surgery appointment over here, then we have to get it done in Pakistan. In Pakistan. So if he can't find anything over here, then let's see. So let's see. The way it works is we have physician assistants that work along. सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई थी, मुझे अपॉइंटमेंट बुक करना था अपने वाले साहब की सर्जरी का। जी सॉरी, शकूर साहब बोलिए, माफ कीजिएगा। सर सबसे पहले तो अल्लाह ताला वालिद साहब को तंदुरुस्ती अता वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे कोई टेंशन नहीं है यार। सर मेरा केस थोड़ा सा काफी डिफरेंट है। मैंने 2008 में MBA किया यूके से,
I was there in 6.5 years. Then I left for Pakistan. Basically, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मैं बलूच हूँ. तो क्योंकि हम फैमिली के साथ टाइज हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनको लेके मैं वापस आया और अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब भी चल रही है. और कंप्यूटर के साथ पहले भी मेरा एक अच्छा वास्ता रहा. मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा था. अभी दोबारा मैं, क्योंकि मेरे को 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन मैनेजमेंट, अभी मैं डेवऑप्स का आप लोग का स्टूडेंट भी हूँ. रिसेंट जो मेरा आपसे सवाल है, जो मैं चाह रहा था कि क्योंकि मैं दोबारा यूके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं 6.5 इयर्स वहाँ पे रहा, PSW भी ले लिए, सारी चीज़ें ले ली, सारा सब कुछ ले जॉब नहीं लिया. मिली आपको? नहीं, मैं खुद वापस आया. मेरे 2 इयर्स का PSW था, उसमें से 8 महीने मैंने गुजारे, फिर वापस आ गया क्योंकि वालदा क्यों, की क्या तरफ से हुआ? वो था. What happened? वालदा मैंने की तरफ से PSW में थे 2005 2006 में जब मिल रहा था. सर मैं क्योंकि 2011 तक वहीं पे था, तो वो लास्ट मेरे 2011 ख्याल में हमारे बीच में उन्होंने फिर चला. बंद कर दिया, दोबारा खोला ना उन्होंने, बीच में जी, उन्होंने बंद. दोबारा खोला. तो मेरा प्लान, क्योंकि दोबारा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो सिस्टम चल रहा है, तो मैंने दोबारा से प्लान किया कि मैं वापस यूके चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी है, सारी चीज़ें भी हैं, सब कुछ है. तो यही चीज़ मैंने की कि जी डेवऑप्स करके फिर दोबारा से इस सिस्टम को मैं दोबारा से जोड़ लूँ. क्या आप समझते हैं कि मेरा सही फैसला है? क्योंकि MBA भी मैंने किया, 22 ईयर्स की एक्सपीरियंस है, मैं दोबारा जाना चाहता हूँ. देखें, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, ठीक है ना. अनफॉर्चुनेटली दैट इज द रियलिटी. इट विल बी लाइक दिस बिकॉज डॉक्टर इरशान अहमद ने बड़े इसमें अच्छी तरीके से कहा है, पाकिस्तान एक मुनाफिक रियासत है, यहाँ के लोग मुनाफिक हैं, ठीक है. यहाँ पर हालात कभी बेहतर नहीं होंगे. यहाँ पर चीज ऊपर ही जाती है, नीचे तो नहीं आती, राइट. जिस जमाने में मैं जा रहा था, उस जमाने में 75 रुपीज का पाउंड था, राइट. सर 70 रुपीज का पाउंड था. आज कितने का पाउंड है? 350 का, राइट. सो यू कैन इमेजिन के इन 23 24 25 ईयर्स में क्या हालात हो चुके हैं, राइट. पाकिस्तान जो है, क्या उसमें इज देयर एनी रे ऑफ होप के हालात बेहतर होंगे? हाँ, होंगे, बेहतर होंगे, बट इट नीड्स टू गो थ्रू अ क्लेंजिंग प्रोसेस बिकॉज अंटिल एंड अनलेस द पीपल डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन. तो कभी देखो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन का जो निज़ाम है ना, वो इंसाफ पे चलते हैं. तो अगर यहाँ कुफर की जो कंट्रीज हैं उसलिए कामयाब है, इंसाफ है. वहाँ इंसाफ नहीं है, वो गरीब है तो उसका कोई इंसाफ नहीं है, जितने बड़े चोर है वो उसके लिए सब कुछ है, ठीक है. तो जब तक इंसाफ नहीं होगा ना, तो तब तक वो चीज़ खराब रहेगी. तो वहाँ पर आप अपनी फैमिली रेज नहीं कर सकते, आप अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते, आपको हमेशा परेशानी रहेगी. दैट इज द ट्रू, इट्स अ वेरी हार्ड ट्रूथ. The same thing happens in India. The same thing is in Bangladesh. The same thing is in Nepal. So if anyone is from there, that is the reality. That's a hard, stark reality. That same reality is in African countries as well. And that same reality is in Middle Eastern countries as well. Apparently, if you look around, none of the countries have any justice system as compared to, देखो, this justice system is based on kufr. अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने जो 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 वहाँ का बादशाह था उसके लॉ के मुताबिक पकड़ा, उसको बिठाया. मैंने जब आयत पढ़ी उसके लॉ के मुताबिक, अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो उसका कानून था. तो इसमें जब मैंने आगे तफसीर पढ़ी तो पता चला कि भाई हमें मुसलमानों को अल्लाह का कानून की निफाज करनी चाहिए. तो कानून है ही नहीं हमारे पास, तो ठीक है. लेकिन उससे मुझे ये पता चला कि जब आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, यू हैव टू फॉलो द लॉ. सो यू हैव टू फॉलो, कंप्लाई विद द लॉ. लॉ तो नहीं तोड़ सकते ना, यू हैव टू कंप्लाई विद द लॉ. What I'm saying is that all of these things taken into consideration, there is nothing there that you can materialize, right? That's one thing you have to understand. एक मिनट सब्र कीजिएगा बेटा. अगर आप स्टैंड लेकर आ गए, सारी लकड़ी काट दो, ठीक है इंशाल्लाह. मुझसे सॉरी, मुझे बहुत सारी लकड़ी भी काटनी है. तो that gives you a good workout as well, right? So the best way for you is, ठीक है, you have to move out. That is the best way. And उसके लिए अगर तुम DevOps SysOps पढ़ते हो, साथ में अगर डिपेंडिंग कि तुम कितना पढ़ सकते हो और कितना टाइम तुम्हारे पास है, राइट. अगर किसी के पास बहुत मिनिमम टाइम है, DevSysOps पढ़े. अगर किसी के पास ज्यादा टाइम है, 2 घंटे रोजाना की वीक डेज के हैं, तो DevOps SysOps मिला के पढ़े.
अगर उसके पास 1 घंटा है तो ना वो अगर 1 घंटा है तो सिर्फ क्लाउड साइबर सिक्योरिटी पढ़े, अगर 2 घंटे हैं तो डेवऑप्स और क्लाउड साइबर सिक्योरिटी पढ़े, अगर 3 घंटे रोजाना वीकडेज में दे सकता है तो डेव सिसऑप्स और जो ना क्लाउड साइबर सिक्योरिटी मिला के पढ़े 3 घंटे। तो वीकडेज में अगर 3 घंटे लगाएगा तो उसको वीकेंड में 6 घंटे लगाने पड़ेंगे। वीकडेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3-3 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है ना। बाकी के लिए उसको अलग से करना पड़ेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारा क्या वो है, थ्रेशोल्ड कितना है। यहाँ पर एक लड़का है मामून बशीर, उसका मैंने सीवी बड़ा जबरदस्त बनाया है। वो फार्मासिस्ट है बाय प्रोफेशन, जॉब अब नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं, तो वो हमारे इसमें आ गया। नाउ माशाल्लाह इज लुकिंग फॉर ऑल दोस थिंग्स, उसको कॉल्स वॉल्स आ रही है, सब कुछ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी बहुत अच्छी जॉब लगाएगा। बट ही कंज्यूम 3 tracks and he was mashallah able to consume, finish. I mean it's amazing कि उसने कर लिया माशाल्लाह। So it all depends on your personal वो कि तुम्हारी elasticity, तुम्हारी bandwidth कितनी है, because that bandwidth will matter, ठीक है ना। Now जो एक और चीज जो बड़ी मैटर करेगी तुम्हारे लिए, ठीक है, वो मैटर करेगी, शकूर नाम है ना तुम्हारा, क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम? शकूर, राइट? जी जी, शकूर नाम है। सो एक और चीज जो मैटर करेगी वो मैटर करेगी भाई कि अगर तुम जाते हो तो तुम्हारे पास कितना टाइम है, हाउ बिग इज योर फैमिली, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जब तुम जाते हो यू हैव अ गुड बैंक स्टेटमेंट टू शो एंड टेल देम कि भाई यू आर गोइंग देयर टू डू अ मास्टर्स और समथिंग लाइक दैट, राइट, इन डेवऑप्स और सिसऑप्स, बट अप्लाई फॉर इट sometime next year in February, ठीक है, because build up your resume, show them that you did this, you become a DevOps engineer, you change your career into a second career, so on and so forth, and now you're going towards that, and now you want to ensure कि भाई तुम उस पे आगे जा रहे हो, right, and then apply for it. If you do all of these courses, DevOps, SysOps, and you go through all of them, and और अगर तुम DevOps, SysOps, AI Ops कर लिया, मतलब कि AI कर लिया साथ में, it's amazing, तो फिर तुम कंफर्म है कि तुम 65 to 75,000 pound की जॉब पकड़ सकते हो यूके में, एंड दैट इज कंसिडर्ड अ गुड जॉब टू कीप अ फैमिली, ठीक है। 2 साल का तुम्हें PhD मिलेगा और तुम उसको करके जा सकते हो, ठीक है। दैट इज व्हाट कैन बेनिफिट यू इंशाल्लाह। नाउ ऑलरेडी तुम्हारे पास एक अच्छा वो है, तुम बोलना तुम्हारे पास एक अच्छा एक्सक्यूज है कि भाई मैं जा गया था पहले, लास्ट टाइम भी गया था, किया, वापस आ गया, अब मैं दोबारा एक और डिग्री करना चाह रहा हूँ, जस्ट वांट टू अपग्रेड माई सेल्फ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसकी जो लेटर राइटिंग है सब हम तुम्हें इसमें हेल्प कर देंगे, ठीक है। बट पढ़ना क्या चाहिए, डेवऑप्स, सिसऑप्स, AI, अगर ये तीनों मिला के पढ़ते हो इट्स अनबीटेबल, you will be able to secure a much better employment with all of these credentials that तुम्हारे पास हैं, and you'll be able to go into basically the industry much faster. That is my recommendation for you, Shakur, ठीक है, Abdul Shakur. So that is my recommendation. The rest is up to you, what you want to decide, what you want to go for, वो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि तुम उसमें क्या करना चाहते हो, किस तरह से करना चाहते हो, ठीक है। जी, ये जरूर है कि अगर तुमने कर लिया, लास्ट टाइम अगर तुम्हें जॉब मिल जाती तो शायद तुम सेटल हो जाते। आई एम नॉट श्योर कि लास्ट टाइम तुम्हारे साथ क्या हुआ। अभी जैसे लड़के को जॉब मिली तो उसको वर्क परमिट भी, उसका तो 6 महीने रह गए थे PSW खत्म होने में, उसकी जहाँ जॉब लगी अब उसको वो लोग वर्क परमिट भी दे रहे हैं। बट यू नीड टू हैव द राइट स्किल्स कि वो तुम्हारे पीछे भागे। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे पीछे सब भागेंगे जो तुम्हारे राइट स्किल्स हैं। अगर तुम बिल्कुल बेयर बोन स्किल्स लेकर आ रहे हो तो फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं देखेगा। तो ये जो है ना, पकड़ने के लिए तुम्हें अपना थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज माय रिकमेंडेशन। जी अली साहब बोलिए। थैंक यू। अली आपका सवाल हो गया ना आपका, आर यू डन, राइट? अमार साहब आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैंने और मेरे मामू ने ना पिछले साल कैट में एनरोलमेंट ली थी, तो उनको सवाल करना था, वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता अफ्रीका साइड। तो सर मसला ये है कि वो फिर कोर्स ईयरली खरीदने के बाद अफ्रीका चले गए थे, कोई जॉब वॉब काम के सिलसिले में, तो फिर वो पढ़ नहीं पाए थे। अभी वो पहले 8 साल यूके में भी रह चुके हैं, तो अभी वो वापस आ गए हैं पाकिस्तान, वहाँ पे कुछ नहीं बना, तो सर वो वापस यूके निकलना चाह रहे हैं और कोई कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं ताकि अपनी स्किल्स डेवलप कर ले। तो सर क्या पाथवे होगा, मतलब किस तरह से वो करे तो वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करके और स्किल्स एक्वायर करके ना वापस यूके की साइड जा सके। शकूर साहब का पाथवे है, तुम्हारे मामू का पाथवे है? मतलब डेवऑप्स सिसऑप्स पढ़ के वहां तक वहां निकल जाए। डेवऑप्स सिसऑप्स AI पढ़ें, पढ़ के जाएं उसके ऊपर। उनकी जॉब देखो, जो जितना सीनियर आदमी होता है ना उसको इतनी सीनियर प्रिपरेशन करनी होती है कि वो मार्केट में घुस सके। क्योंकि मार्केट में जब आप घुसने जाते हो ना तो आपको वो देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि मार्केट में कौन सा टैलेंट आ रहा है।
ठीक है, तो अगर आप ठीक। बहुत ही एक्सेप्शनल हैं तो आपको बिठा देंगे, अगर आप एक्सेप्शनल नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ एक्सेप्शनल यू आर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. मैं इसको खत्म करूंगा सेशन को, काफी देर हो गई. मुस्तकिम का सवाल लूंगा मुदस्सिर, बिकॉज मैं 12:30 बजे बैठा था, 1:45 और अब 3:15 हो रहे हैं. आई नीड टू प्रेस सलाह. जी मुदस्सिर साहब बोलिए. फैसल भाई, मुझे एक चीज पूछनी थी कि मैं आईएसओ में अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेशन चल रही है. बट वो मुझे, क्योंकि मैं वहाँ गया था कि मुझे सीखने को मिलेगा कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सारे कंट्रोल्स, रिस्क एनालिसिस वगैरह ये सब. बट वो मुझे एक दो डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई, विसल ब्लोअर पॉलिसी हो गई, कहते हैं इसको रिव्यू कर लो, कुछ अमेंडमेंट्स हैं, मार्किंग है तो बता दो. बट वाई आर वो मुझे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में ले ही नहीं रहे. देखो, देर आर मल्टीपल रीजंस. अगर तुम्हारा मैनेजर अच्छा नहीं है तो वो डरेगा कि यार मैं इसको बिठाऊंगा, ये मेरी जॉब ले लेगा. ठीक है. दूसरा एक और ऑप्शन ये होता है कि ना, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर. ठीक है. तुम कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे करोगे, तुम उनके साथ कैसे पार्टिसिपेट करोगे. यू नीड टू. ये रिमोट जॉब है या फिजिकल जॉब है? नहीं, फिजिकल जॉब है. वो अपना ये केपीएमजी के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हैं. तो मैं तो यहाँ गया था कि मुझे शायद ये लोग खुद इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, बट दे आर ऑल्सो नॉट केपेबल. वो तो भी जो है. एक और मसला है, तो अगर वो थर्ड पार्टी से ऑडिट करवा रहे हैं तो तुम उसको मैनेजर से बात करो, बोलो कि आई कैन लीड दिस थिंग, है ना, मैं आपके साथ इसको लीड कर सकता हूँ, आप मुझे मौका दीजिए कि मैं इसको लीड करूँ आपके साथ. तो क्या तरीकेकार है ना इसका, मुझे आप लीड दें, लीड पोजीशन पे दें, तो मैं इसको आपके साथ लीड करके इसको वो चला के लेके दिखाता हूँ आपको. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. तुम्हें इसको देखना पड़ेगा. ठीक है ना, तुम्हें तो बातचीत करनी पड़ेगी. तो मुझे थोड़ा सा राइट अप करके दो, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, तो मुझे लिख के दो. मैं थोड़ा सा इसको देख कर सब चीज करके तुमको बताता हूँ. ठीक है, ताकि वो चीजें हो सके. फिर मैं तो एक मतलब कि रास्ता होता है, इसको बनाना पड़ता है. ठीक है, तो वो हम कर लेंगे. देयर इज अ वे, देयर इज ऑलवेज अ वे. ठीक है, ठीक है. इंशाल्लाह आई विल टेल यू. ठीक, जजाक. जी 157752. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. तुम्हारा नंबर क्या है? 157752. तुम्हें पेरेंट्स ने बाइनरी नंबर रखा था तुम्हारा? नहीं सर, ये आपका पासवर्ड है। किसका पासवर्ड? ये इस मीटिंग का पासवर्ड है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. अच्छा जी, बोलिए, क्या क्या बात है? सर मैं दरअसल निज़ामी कर रहा हूँ अभी। 12 पास की है पिछले साल। तो 2 साल पहले मैंने 3 मॉडलिंग एक कोर्स है आपका, उसमें मैं एनरोल हुआ था, वो मैंने कंप्लीट किया था, लेकिन थोड़ा सा रह गया था, वो कंप्लीट नहीं हो सका। अभी मैं दोबारा से ज्वाइन करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास टाइम कम है। तो आप मुझे बताएं कि 1 साल में, मेरे ख्याल में इतना टाइम तो मुझे नहीं मिल सकता मैं कंप्लीट कर सकूं। तो कोई आसानी अगर हो जाए, मैं कोर्स ले सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास, मैंने बताया ना, अगर 1 घंटा है तो तुम डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी पढ़ सकते हो. अगर 2 घंटे हैं तो तुम डेवऑप्स और डिप्लोमा क्लाउड साइबर सिक्योरिटी पढ़ सकते हो. अगर तुम्हारे पास 3 घंटे हैं तो तुम डेवऑप्स, सिसऑप्स और डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी पढ़ सकते हो वीकडेज में. तो वीकडेज में तुम जितने टाइम लगा रहे हो, वीकडेज का मतलब होता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. और वीकेंड्स जो है सैटरडे, संडे, में तुम्हें डबल टाइम लगाना पड़ेगा. तो अगर तुम यहाँ रोजाना 1-1 घंटा लगाते हो, 5 घंटे हैं, तो तुम्हें वीकेंड्स पे 2-2 घंटे लगाने. सर मेरी सिर्फ फ्राइडे को छुट्टी होती है। तो अगर तुम्हारे और बाकी कोई टाइम ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो जाओ फिर अपनी पढ़ाई करो. मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, जब तुम्हें टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास और कुछ पढ़ने का, और तुम बोल लो भाई मेरे पास और कोई छुट्टी नहीं है, बस मैं यही कर रहा हूँ, बस फिर मैं उसमें क्या बताऊँ. नहीं, ऐसा मैंने कैसे हो करना सकता है। है कि तुम टाइम नहीं निकाल सकते? ऐसा होता नहीं है. टाइम है सर, मगर ये क्या, रोजाना में टाइम तो दे ये सकता हूँ तुम्हें 1 घंटा। देखो, मैंने तुम्हें बता दिया है तुम्हें कैसे करना है. अब ये तुम्हें खुद फिगर आउट करना है. अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई 2 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, हमें सब नमाज बता दी. अब हम बता दिए ये पढ़नी है. अब मैं आके उनसे पूछूं कि भाई इसको किस टाइम पे पढ़ूं, टाइम भी बता दिया. नहीं, उस टाइम पे किस टाइम पे स्पेसिफिक पढ़ूं, पड़ेगा ना फिर. रिश्ते बहुत अच्छा मांगेंगे यार, तुम्हें सब बता दिया था, तुम दरस निजामी कर रहे हो, स्कॉलर बन रहे हो, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि भाई अब मैं क्या करूं. कैसे स्कॉलर हो गए तुम? तो तुम्हारे पास कौन आएगा बात करने के लिए? मैं तो सर, बिल्कुल मेरा जवाब होना चाहिए ना, हाजिर दिमाग होना चाहिए. सर असल में इस फील्ड से मेरा बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो ये है कि एक अलग फील्ड है, और 12th क्लास मैंने कंप्लीट की अभी। अगेन तो देखो, फील्ड, सारी फील्ड जो है ना, वो एक दूसरे के साथ आके मिलती हैं. दीनदार आदमी को सबसे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए. ठीक है ना. तो
मैं इसमें तुम्हें क्या क्या बोलूं? I mean, this is something you have to figure out yourself. तुम खुद देखो कि तुम कहाँ किधर कैसे जाना चाहते हो। जी उजैर साहब बोलिए, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आपने मुझे पिछले हफ्ते इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ हाँ, क्या हुआ भाई तुम्हारा? तुम इतनी देर से बैठे हो उसके, तुम क्या रोजा रखना है तुम्हें? नहीं, वो बस मैं आपका वेट कर रहा था, अपनी बारी का, मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैसेज करते थे कि भाई फैसल भाई मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, इतनी देर से बैठा हूँ, तो मैं तुमको बोलता आज उसको सामने ले आओ यार। नहीं, अच्छा कोई मसला नहीं। क्या हुआ? अच्छा, क्विकली दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि वो इंटरव्यू तकरीबन क्लियर हो गया है, उन्होंने नेक्स्ट वीक थर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाना है और वो फोर्थ इंटरव्यू तक जाएगा। तो उन्होंने वही कंफर्म नहीं किया, बट वो उन्होंने रिक्रूटर को ये कहा है कि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा किया और हम कंफर्म कर देंगे फ्राइडे तक कि कौन सी डेट होगी नेक्स्ट इंटरव्यू की। तो एक तो वो आपको बस थैंक यू करना था। That's good, दूसरा माशाल्लाह। मुझे अमेजोन से कॉल आ गई है, अमेजोन ऑस्ट्रेलिया से सिक्योरिटी इंजीनियर की इंटरव्यू की। तो उसका मुझे थोड़ा सा है, वो 1 घंटे का फोन इंटरव्यू है, उसके साथ 1 घंटे की असेसमेंट है, कोई रिटन असेसमेंट है शायद, फिर वो 5 इंटरव्यू या 6 इंटरव्यू की सीरीज है वीडियो की। तो वो मुझे थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना था। बेशक अभी टाइम नहीं है तो नेक्स्ट टाइम भी कर लेंगे, बट मैंने आपको बस ये बताना था कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे वो अमेजोन के हवाले से, give ठीक है me नॉर्मली। all the मतलब कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दो। कल उस इंटरव्यू की तैयारी उसको टिकटॉक की करवानी है, तो मैं कल तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा एंड आई विल प्रिपेयर यू एज वेल इंशाल्लाह। ठीक है, काफी टेक्निकल है उसमें। तो मैं ये चाह रहा था कि मैंने वो देखा था एक और नया। मुझे लिख के भेजो क्या है, मैं तुम्हें इसमें से जो भी सवालात आ सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह तुम्हें बता दूंगा उसमें। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, मैं आपके साथ ठीक ये है इंफो शेयर कर, ठीक है ना? जॉब डिस्क्रिप्शन मैं आपके साथ शेयर कर बाकी तुम दूंगा। सारी चीजें अपनी खत्म कर देना और जो उनको सीवी जमा कराया जरा वो भी दिखा देना। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, एक बात मुझे ये कंफर्म कर दीजिएगा कि जो नया साइबर सिक्योरिटी का ट्रैक आया, क्या ये मुझे ये कर लेना चाहिए? क्योंकि मैंने अमेजोन का इंटरव्यू जो है वो थोड़ा लेट रख पाया, 10 मई को है। मैंने कहा कि अगर दरम्यान में 10 टाइम मई मुझे को तुम्हारा चाहिए। इंटरव्यू, तो फिर हम कल तैयारी नहीं करते हैं, फिर हम थोड़े से लेट से करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तुमने अभी सिसऑप्स और डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक लिया है ना? हाँ, वो मैंने कर SysOps तो मैंने कर लिया और डेवऑप्स की भी काफी चीजें मैंने कर ली हैं। हाँ, तो जब तुमने वो लिया है तो तुम्हें क्लाउड साइबर सिक्योरिटी साथ में मिलना चाहिए। You हम्म। don't buy it. It's part of that. It comes as with that. हाँ, अगर तुम्हें नहीं मिला है तो तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेजो, मैं तुम्हें यूनी बंडल में दूंगा। यूनी बंडल एक नई चीज आई है कि अब हम आप सबको ना एक बंडल देंगे। एक बंडल के अंदर जैसे एक बंडल क्लाउड सिक्योरिटी का मिलेगा, एक बंडल आपको डेवऑप्स का मिलेगा, एक ही कोर्स मिलेगा, उसमें सारे कोर्सेज एक ही कोर्स के अंदर सारे कोर्सेज। तो वो मैं सपोर्ट को बड़े अरसे से वो कर रहा हूँ, वो रिप्लाई करना छोड़ गए हैं मुझे कि सिर्फ ये बात ये सीम का यूनी मैं चाह बंडल रहा हूँ वाली। नहीं नहीं, ये मुझे सीम का वो इलास्टिक सर्च चाहिए, मैं चाह रहा हूँ एक दफा मैं थोड़ा सा देख जाऊँ। तुम मुझे अपनी आईडी बताओ, ईमेल मुझे जरा भेजो कि ये मेरी आईडी, मैं बीच में चेक करके बता दूं तुम्हारे पास है कि नहीं। असल में उतने सारे कोर्सेज मिलते हैं, उसमें बंदा खो जाता है कि कहाँ जाए, तो इसलिए तुम्हें सिर्फ जब तुम ये लोगे ना, अगर तुम्हें नए सिस्टम में आना है तो तुम्हें सिर्फ दो कोर्सेज में तुम देख सकते हो कि तुम्हें कौन से कोर्सेज कैसे, मतलब एक कोर्स खोलोगे सारे कोर्सेज तुम्हें लाइन से नजर आ जाए, पता मीन वो ठीक है, सारे 8 कोर्सेज सब खत्म हो जाएंगे। ये नया मैंने है। आपको मैंने आपको ईमेल एक तो सेंड कर दिया। अच्छा, और एक नया भी आया, बिल्कुल नया आया, जो मेरे ख्याल में ऑफेंसिव साइड ऑफ द सिक्योरिटी है, वो उसका भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो मेलवेन सारा एनालिसिस हैंड्स ऑन लैब्स और जस्ट लैब्स, उसमें वो सिर्फ वो लैब्स ही वो लैब्स। वो रेडी है या अभी उसमें कुछ चीजें वो आनी सब है? रेडी है, उस कंप्लीटली रेडी है, उसमें बहुत 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 सारी, मतलब कि ना 700 के करीब लैब्स। अगर मैं उसको ले लूँ तो वो मुझे एक फायदा देगा अमेजोन के इंटरव्यू के लिए, मतलब इतना वो रेडी है? अमेजोन का जॉब डिस्क्रिप्शन देख के तुमको बता सकता हूँ। अगर तुम्हें बहुत ही अखीर किस्म का पेन टेस्टर बनना है और उनके नेटवर्क्स को तोड़ना है, फिर तुम्हारे काम आ सकता है। चले, तुम्हारा मैं काम, आपके साथ हाँ अगर मैं तुम्हारा आपके काम साथ सिर्फ नेटवर्क डिजाइनिंग है, सब कुछ है, तो फिर तुम्हें मतलब कि ना आर्किटेक्चर डिजाइनिंग सब कुछ है, तो उसमें तुम्हें क्लाउड जरूरत। से, हाँ बेसिकली 3-4 चीजें चाहिए उसमें। उसमें एक तो क्लाउड सिक्योरिटी का है, क्योंकि मैंने वो सिसऑप्स वगैरह सारा डाला हुआ था। क्लाउड सिक्योरिटी मांगी हुई है, नेटवर्क एंड होस्ट सिक्योरिटी मांगी हुई है, एंड पॉइंट मतलब। और फिर इसके वो अलावा फिर वो आता है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, माइटर अटैक पूरा आता है, पूरा माइटर अटैक है उसके अंदर। सही, अगर ठीक तुमसे है। बोले कि यार हम लोग जाना ये वाली ऑफेंसिव टेस्टिंग कैसे करेंगे, वो वाली ऑफेंसिव टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट इज कवर्ड एवरीथिंग। मेटास्प्लॉइट कैसे चलाओगे, तो तुम बोलोगे कि भाई अगर मेरे पास ना ये सिचुएशन आएगी तो मैं मेटास्प्लॉइट में ये
मॉड्यूल्स को इनेबल करूंगा, ये चलाऊंगा, इस तरह से उसको हैक कोशिश करूंगा, इस तरह से मैं रिकॉनेसेंस करूंगा, वो सारी चीजें उसके अंदर। तो मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन पहले तो फिर मैं तुमको बताता हूँ। देयर इज नो पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कीप ऑन बाइंग न्यू थिंग्स, ठीक है ना। टोल्ड यू लास्ट टाइम कि भाई टेक अ पॉज, स्टॉप, ठीक है ना। अगर तुम जाके अमेजोन से बोलो ना भाई देखो आई एम वर्किंग ऑन स्मार्ट ऑप्स, बोलेंगे व्हाट इज स्मार्ट ऑप्स, तुम बोलो से कॉम्बिनेशन ऑफ डेवऑप्स, SysOps, which AI, big data, and DevSecOps. If you combine all these five, you get basically what? You get smart ops. Smart ops is the next generation thing where like, and this is something I'm working on. तो अगर तुम इस तरह से उनको बोलोगे, बोलेंगे हाँ स्मार्ट ऑप्स, ये स्मार्ट बंदा है, इसको रखना चाहिए, ठीक है। तो स्मार्ट अभी इंडस्ट्री सोच रही है, और अगर अमेजोन की किसी बंदे को पता चल जाता है ना, तो वो जाके ना सारी बातें शुरू करते हैं, बातें करते करते बोलते हैं चलो काम शुरू करो, काम शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर वर्कर्स, दे गेट द वर्क डन, ठीक है। ये फायदा है। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो फिर तुम मतलब कि तुम इसमें फिर जाओ ना, मतलब कि फिर तुम बोलो कि स्मार्ट ऑप्स की पूरी हम प्रैक्टिस अगर बनाएं और लोगों को बच्चों हम अपने क्लाइंट्स को बोलें कि भाई एक ही जगह से तुम सारी चीजें लोगे और वी विल बी एबल टू मॉनिटर एंड मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फिर बात बनती है, फिर वो बोलेंगे हाँ यार ये बंदा सही सही कह रहा है, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। कैसे करेंगे बोलो, आई हैव द विजन एंड आई हैव सम प्रोसेसेस इन प्लेस, परहैप्स वी कैन बिल्ड इट अप टुगेदर, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है। मैं तुम्हारा कोर्स खोल के देखता हूँ कि डू यू हैव देयर एक्सेस और नॉट राइट नाउ, एंड आई विल टेल यू राइट नाउ। जी इरफान अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? इरफान अली कौन है? जिनको सीवी देना था वही इरफान अली? नहीं नहीं सर, फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है आपको। अच्छा जी इरफान अली साहब बोलिए, क्या आपका सवाल है? सर मैंने पूछना ये था कि वो मैंने कोर्स करना था साइबर सिक्योरिटी का, तो उसमें इधर आपका डेवऑप्स और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आ रहा है, लेकिन अब मसला ये कि उसमें तो वो फीस भी बहुत ज्यादा है कि वो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता आसानी से। तो अब अगर इतने पैसे हो तो फिर तो बंदा मतलब कर सकता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं उसमें, हार्वर्ड भी करवा रही है, स्टैनफोर्ड भी करवा रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज। तो इस तरह नहीं हो सकता कि मतलब अगर हम हाफ फीस दें पहले और पूरी एक्सेस हमें कोर्स की मिल जाए, तो उसके बाद जब हम जॉब ले लें तो उसके बाद हम बाकी पैसे पे करें। तुम एक काम करो ना, तुम ना हार्वर्ड पे जाओ, बोला आप मुझसे हाफ फीस ले लें, और जो ना आप मुझे सारा कोर्स का एक्सेस दे दें जो आप डिग्री करवा रहे हैं ना। और डिग्री नहीं, एक होता है डिग्री, एक होता है वो छोटे मोटे जो हार्वर्ड कोर्सेज करा रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम्हें करना है तुम कर लो, मैं तो मना नहीं कर रहा। तुम हार्वर्ड से जाके बोलो, स्टैनफोर्ड को, MIT को जाके बोलो कि भाई मैं डिग्री में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा हाफ, आप मुझे सारा एक्सेस दे दें, मुझे पूरी डिग्री कर दें, जॉब हो जाएगी, मैं आपको दे दूँ। कि तुम्हें क्या जवाब देंगे इसका? नहीं सर, ऑब्वियसली वो तो नहीं देंगे ना, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वो भी मैंने मतलब तुम्हें इस इसका तरह जवाब दे करवाते दिया। हैं, देखो भाई, मैं यहाँ लेकिन पर जो टीचर है ना, टीचर उनको उनको मुझे ना पेमेंट देनी होती है, वो अपना टाइम क्यों लगाएंगे, मैं कहाँ से दूं? मैं अपनी जेब से दे दे के थक गया हूँ भाई, मैं नहीं दे सकता, मैं अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता ना। मैं 1.5-2 लाख डॉलर अपनी जेब, 2 लाख से ऊपर डॉलर मैं लगा चुका हूँ अपनी जेब से, लोगों को पढ़ा लिया, लोग पैसे लेके भाग गए, छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है ना। और शुरू शुरू में आए, रोए धोए, सब कुछ किया, मैंने कहा ठीक है इसको दे दो यार, ठीक है। पैसे तो मेरी जेब से जाते हैं ना, टीचरों को तो पैसे दे रहे थे, फ्री में थोड़ी होती कोई चीज़, ठीक है। टीचरों को तो उनको नजर आता है कि कितने कोर्सेज उनके बच्चे रजिस्टर्ड हुए, कितने उनको पैसे देने, कितने उनके पेमेंट जानी है, तो बात खत्म हो गई। तो ये जरूर है कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें इस्तात दी है, तुम उसके हिसाब से सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एफिलिएट प्रोग्राम में जाओ, रजिस्टर करो अपने आप को, और उससे मेहनत करो, फिर जाके अपने लिए कमाओ पैसे और जाके अपनी फीस निकालो। The best thing for you is to do what you can as per your capacity, as per your वो। तो जो तुम्हारी चीज है तुम उसके हिसाब से करके जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। दैट इज माई रिकमेंडेशन, ठीक है ना। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू रिकमेंड, ये तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। इरफान अली, आई होप कि आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। अच्छा सर, मैंने जैसे पहले कैट का प्रोग्राम आया था, तो अगर हम खाली कैट करते हैं तो क्या उसकी बेस पे हमें जॉब मिलेगी? उसमें तो बहुत सारी चीजें सिखा दी गई हैं, तो अगर हम खाली कैट करके तो जॉब सिक्योर कर ले, उसके बाद हम बाकी नाफे का कोई प्रोग्राम ले लें, इस तरह बहुत हो अच्छा सकता है? सवाल किया है, इसका सवाल का जवाब भी मैं दे चुका हूँ। जो बच्चे शुरू में कोई कैट करके जर्मनी में बैठ रहे हैं जॉब पे, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, इसका मैं और क्या जवाब दूं? क्योंकि सर ऑलरेडी मैं एक साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर भी चुका हूँ और एक कर भी रहा हूँ,
तो इसीलिए मतलब मुझे बेसिक्स कुछ पता है, ज्यादा तो नहीं पता। तो मतलब ये है कि मुझे आप ये गाइड कर दे कि मुझे कैट का करना चाहिए या वो दूसरा कोई और करना चाहिए, जो ताकि तुम्हारी फिर मैं इस्तात एक है, ही करूं और उस पर पैसे जो, लगाऊं और अपना काम शुरू करूं। जो तुम्हारी इस्तात है, तुम उसके हिसाब से डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, उसको जाके पढ़ सकते हो, उसको जाके तुम दे सकते हो। दिस इज ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू टू डू। ठीक है, उमैर साहब बोलिए। उमैर साहब बोलिए आप। उजैर, तुम्हारे मुझे सिस्टम में नजर आ रहा है कि तुम्हारे पास ना कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक है जो सितंबर 2023 को एक्सपायर हो रहा है। तुम्हारा डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक अप्रैल 6 को एक्सपायर हो गया था। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ठीक है, लिखा हुआ है। हाँ जी, वो मैंने उसमें से काफी कुछ मैंने कर लिया था, अब मुझे वो अच्छा, फिलहाल कुछ चर्चा के लिए नहीं बात चाहिए था तुम्हारा जो इससे। सिसऑप्स है वो जनवरी 7 2024 को एक्सपायर हो रहा है। इसमें नए कोर्सेज की रिकॉर्डिंग मैंने की है, वो भी रिलीज करने वाला हूँ मैं। ठीक है, यू विल बी एबल टू सी दैट। ठीक है, तो तुमने एड ऑन करके लिए हैं सारे। ठीक है ना, तभी तुम्हें वो नहीं, अगर तुम्हें अब वो चाहिए तो तुम्हें वो खरीदना पड़ेगा उसको। यानी कि डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी लोगे तो उसके अंदर तुम्हें बैश ऑटोमेशन वो तो मिलेगा, वो तुम कर चुके हो। लेकिन तुम्हें साथ साथ वो जो ना इलास्टिक सर्च वो सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। वो 5 सर भाई, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, मुझे ना वो साल मिल नहीं रहा। मैंने उसको ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे चेक किया, वो उसका एड ऑन एक जमाने में आ रहा था, बट अब वो आ नहीं रहा। वो तो इन्होंने मैंने फेज आउट कर दिया उसको, उन्होंने फेज आउट कर दिया है। आप ना, मैं ये ज्यादती होगी मेरी तरफ से कि ना, वैसे तो मतलब कि जो रूल्स हैं, अगर आपने उसमें नहीं पढ़ा और नए कोर्सेज वो आते रहते हैं तो आप दोबारा से कर सकते हैं, दोबारा से ले सकते हैं। लेकिन अ, आप हमजा से बात करो, हमजा से बोलो यार कि मैंने सारे कोर्सेज कर लिए थे, मुझे सिर्फ ये 3 कोर्सेज चाहिए जो मुझे चाहिए। तो आप मुझे ये 3 कोर्सेज कितने के दे सकते हैं? हमजा इस बात को डिटरमिन करेगा आपके लिए और आपको दे देगा 3 कोर्सेज। बोले यार मुझे सिर्फ इलास्टिक सर्च के कोर्सेज चाहिए। लाइव क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी फिर, क्योंकि लाइव क्लासेस उसकी जो हैं, जो भी शुरू हो रही हैं, जिसमें सारे ट्रेनर्स बैठे होंगे और सारे सिचुएशंस पे बात कर रहे होंगे, वो अलग होंगी फिर ना। वो तो एडवांसमेंट ट्रैक के लिए, अगर आपको सिर्फ कोर्स का एक्सेस चाहिए तो एक एक्सेप्शनल मामला है ये। उसमें आप अपने लिए एक एवेन्यू बना के जा सकते नहीं, फैसल भाई, आपने जैसे कहा था कि कैट के लोग जो है वो क्लाउड सिक्योरिटी वाला जो डिप्लोमा है उस पर अपग्रेड कर देंगे। मैं उस अपग्रेड पे कर रहा हूँ, क्या वो नहीं हो रहा? मतलब अपग्रेड आप नहीं कर रहे हैं। वो हैं? फिर हमने देखो, वो जो कैट जो था ना, इट्स ऑल गॉन नाउ। अब कैट नहीं है। ठीक है ना, तुम्हें कहीं कैट नजर आ रहा है? नहीं। वो इसलिए कि अब कैट का नाम चेंज हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो अब तुम्हें वहां पर वही नजर आएगा कि क्या है। हाँ, ये जरूर है कि अगर तुम्हें अपग्रेड करना है तो अपग्रेड का ऑप्शन अभी भी मौजूद है। अगर तुम हमारी वेबसाइट पे जाओगे और तुम एजुकॉल की क्वालिफिकेशन पे जाओगे तो तुम्हें वो नजर आएगा, अभी भी अपग्रेड का ऑप्शन नजर आएगा। देखो यहाँ पर जाओ, ये तुम्हारी वेबसाइट है, ट्रैक्स पे जाओ, एजुकॉल लेवल 3 डिप्लोमा पे जाओ, अपग्रेड फ्रॉम कैट, नजर आ रहा है? अच्छा, फॉर ऐसे एक्टिव कैट स्टूडेंट, बट इट हैज यू हैव टू बी एक्टिव। जी, मैं एक्टिव ही हूँ। ठीक है ना, तो इफ यू आर एक्टिव, विच आई बिलीव यू आर, ठीक है ना, जी जी। यू कैन गो एंड से कि यार मैं एक्टिव हूँ और मेरे पास अभी है तो मुझे इसको कर दें, बस खत्म। एग्जाम देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे एग्जाम की जरूरत नहीं है। अच्छा, बस ठीक है, मैं ये बात समझ के मैं इसको कर लेता हूँ। बस लास्ट मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, वो फिर अमेजोन की तैयारी हम कब करेंगे? कल तो आप कह रहे हैं नहीं जॉब नहीं। भेजो, मैं जॉब देखूंगा तुम्हारी, सब देख के फिर तुमको बताऊंगा, फिर हम इसकी तैयारी शुरू करें। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करेंगे। जी बोलिए उमर साहब। जी जी। तो सर, मैं जो कैट का यूज़र था, मुझे जो कोर्स है वो एक्सपायर हो गया था। 1 ईयर पूरा हो गया था 31 मार्च को। तो उसके बाद मैंने वो आपकी रिक्वेस्ट की थी रिज्यूम डेवलपमेंट के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप वेट करें, मई में बताएंगे। तो सर, मैं यहीं मार्खा में ही रहता हूँ और मैं अपनी जॉब स्विच करना चाह रहा था जल्द से जल्द। अकाउंट्स में जॉब करता हूँ, लेकिन मेरी सैलरी कोई इतनी खास है नहीं, तो मुझे इतना अच्छा भी नहीं होता। तो फैमिली के साथ रहता हूँ, तो मैं चाह रहा था कि मैं अपनी जॉब स्विच कर लूँ, रिज्यूम बन जाए, अप्लाई करना शुरू करूँ। तो उस सिलसिले में कॉल की थी। आपका, आप मार्खन में इधर ही रहते हैं? आपने अपने कोर्सेज जी सारे कंप्लीट कर लिए हैं? सर, जो मैंडेटरी थे मैं वो कर सका हूँ, कि मुझे टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। जो शोएब भाई के साथ मैं था टच में, उन्होंने जो मैंडेटरी बताई थी, जो लैब्स बताई थी, वो मैंने कर ली थी। आप मुझे, मैंने आपको ईमेल भेजा है अपना, उमैर, आप मुझे मैसेज जी करें, अभी मैसेज करें ताकि मैं आपको देखूँ, जी फिर मैं आपको बताता हूँ किस पे आपको क्या करना चाहिए।
ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और था ये कि जो कोर्स है जैसे वो चला गया एक्सेस और हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंटरव्यूज की और किस तरह की, तो हम दोबारा अगर उसमें से कंटेंट या कुछ वीडियोस देखना चाहें तो उस एक्सेस लेने के लिए हमें दोबारा पे करना पड़ेगा अगर लैब्स ना हो खाली वो हो। देखो, कोर्स एक पूरा पैकेज है। उस कोर्स में हम लोग नई चीजें ऐड और मॉडिफाई करते रहेंगे। ये सारे डायनामिक कोर्सेज हैं, चेंज होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। अब अगर तुम मुझसे कहो कि यार देखो, मैंने तुमसे कहा ना, हमने प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किया है कि वंस यू कम इन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, एंड इफ यू वांट टू कीप ऑन बेनिफिटिंग फ्रॉम द सिस्टम यू हैव टू कीप ऑन सब्सक्राइबिंग इट। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें हर बार नई चीजें डाल रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। सो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड यू स्टिल वांट टू बेनिफिट फ्रॉम इट, यू कांट बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, सो देयर इज नो इजियर वे फॉर मी कि यार इसको अलग से अलग कर दो, इसको अलग से कर दो। आई कांट डू स्लाइसिंग एंड डाइसिंग फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे लिए मिली हो नहीं सकती। ठीक है, अच्छा सर, शुरू में ये होता कि वो ज्यादा टाइम नहीं दे सकता था क्योंकि मैं यहाँ मार्कम हुआ था तो मुझे जॉब वगैरह की थी, टाइम काफी टाइम लग निकालना जाता था। नहीं निकालना, मैं सुबह सुबह 4 बजे उठता, 11 बजे सोता जी हूँ, 4 बजे जी 5 घंटे मेरी नींद होती है। ठीक है, और जी उसके बाद सर, मैं वो तो एक्सरसाइज आपसे करता देखा हूँ, सब कुछ जी आप करता हूँ। बता तो रहे हैं। देखो मैं टाइम कैसे मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है 5 से 6 घंटे में पूरे ठीक है। दिन। और सर तो ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है ना कि तुम कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। दैट्स नॉट माय जॉब यार। ठीक है। और सर मुझे जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ हो रहा था, तो अब कंप्यूटिंग में जाना इसको है, DevOps फर्दर। SysOps, you have to study DevOps SysOps. There is blockchain, tremendous उसकी opportunities हैं. There is AI ops. Everyone needs to learn AI because it's going to supersede everything. There are so many other things. So you have to go through all of them. But if you want to go into the cloud, DevOps and SysOps is a must for you. Is a must for you. ठीक है? चलें, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह we will talk tomorrow. सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।